Hello everyone, good afternoon. Due to some audio issues, we have had to cancel. So, okay, continuing. In this session, we will discuss the Odisha specific weekly current affairs. Jodi ebe audio, video सब ठीक अच्छी तो मते kindly comment section रे कुहतु. Comment section रे कुहतु और जदी audio, video सब ठीक अच्छी. तो ए सेशन रे हमें 27 जुलाई रू नेकी 3 अगस्त 2025 जाके ओडिशा स्पेसिफिक वीकली करंट अफेयर्स एज यूजुअल हमें कवर करबा जहां प्रीवियस वीक रे हेची. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मु अगेन एठी आउथर कहि दउची ओपीएससी ओसीएस प्रीलिम्स 2024 पई कि जो माने प्रिपेयर होतिबे से माने बोथ जीएस1 और जीएस2 बोथ इंग्लिश और ओडिया मीडियम रे एठी क्लासेस एनरोल करि परिबे जोठी से मानको अप टू 15% ऑफ भी मिलबो. कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन रे अछि जोठी कि बोथ जीएस पेपर्स और सीसैट कवर हम रेकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स रोचे 12 मंथ्स करंट अफेयर्स कवरेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस हम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी से माने दे पारिबे जोटा 24 नंबर रहइबो 16 टा भितर सेक्शनल रहइबो और 8 टा फुल लेंथ टेस्ट रहइबो आ प्रीलिम्स टेस्ट दे सारला परे तार डिस्कशन क्लासेस मध्ये कंडक्ट हबो एंड वन ऑन वन मेंटरशिप सेशन रो मध्ये अवेलेबल अछि. जहाँ भी क्लास रे पढ़ेबी मु ताको तार लिंक जाइकी कमेंट सेक्शन रे लिंक थ्रू रू जाइकी पीडीएफ से माने डाउनलोड करि परिबे फॉर रिवीजन. जो माने भी देखुछन से माने कोन तो कोनी थरे मु पचरची ऑडियो और वीडियो बोथ क्लियर अछि कि नाही. ओके आई एम प्रोसीडिंग देन. फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन स्टार्ट करबा पूर्व हमें देखिबा कि हमें आज कोन कोन टॉपिक्स कवर करबा. जीएस2 रो 8 टा टॉपिक्स अछि, जीएस3 रो 10 टा टॉपिक अछि. जीएस2 फर्स्ट टॉपिक अछि लोक अदालत ऊपर गोटे न्यूज अछि. देन ओडिशा रेनबो प्राइड वर्क 2025 ऊपर गोटे न्यूज अछि. ट्रांसफॉर्मिंग विलेजेस एक्सपैंड्स मॉडल जीपी इनिशिएटिव आ ऊपर गोटे न्यूज अछि. आकांक्षा हार्ट अभियान आ ऊपर गोटे न्यूज अछि. ओडिशा लॉन्चेस ऑसम ऐप एंड आसो जीवा अंगनवाड़ी कैंपेन. Talks to resolve Mahanadi dispute. Rural heritage sites to be identified, preserved under the new government initiative. Shakti Apas गोटे नुआ कॉन्सेप्ट आसीची जोटा कि सब जगह डिस्ट्रिक्ट रे सून लॉन्च हबो ता ऊपर मध्ये गोटे न्यूज अछि. जीएस पेपर 3 रो 10 टा जगह कोन आमे आज पढिबा जीएस पेपर 3 अंडर रे. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपर्ट्स अर्ज रिस्पांसिबल लिविंग एंड डिजिटल इनोवेशन इन कंजर्वेशन फर्स्ट. And then Odisha's rising tiger numbers bring pride and challenges. Second news. Then Odisha used this much percentage of the CAMPA funds in this years. What a report asichi. Edward syndrome eta gote bahut important news science and tech ro prelims रे आसी पारे. एडवर्ड सिंड्रोम ऊपर गोटे न्यूज अछि. टाइगर्स मानक इंट्रोड्यूस करा जाउछि कोठी देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रे ता ऊपर न्यूज अछि. पोटैटो फार्मिंग ऊपर न्यूज अछि. डीआरडीओ रे सक्सेसफुली टेस्ट फायर हेछि प्रलय टैक्टिकल मिसाइल. कोरापुट सोलर फार्मिंग बूस्ट विथ एग्री फोटोवोल्टाइक्स. जैकफ्रूट इकोनॉमी ऊपर न्यूज अछि. एंड लास्टली ओडिशा टॉप्स इन सिकल सेल डिजीज वेरी इंपोर्टेंट. मिसलेनियस करंट अफेयर्स गोटे अछि जोटा होछि पुष्कर बैग्स नेशनल अवार्ड. एटा मिसलेनियस अंडर रे मु आपु रखिछि and is only important for prelims. सेशन टी स्टार्ट करबा पूर्व प्रीवियस सेशन रे मु जहां भी क्वेश्चंस देइथिली अंडर द करंट अफेयर्स को माने सबु ताको अटेम्प्ट करछथि. जो माने प्रीवियस क्लास अटेंड करि नथिले बा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करि नाहंती से माने जे कि प्रीवियस रिकॉर्डेड लेसन आउथरे देखि परिबे आ जो माने देखि नाहंती एठी मु आउथरे से क्वेश्चन को ब्रीफली डिस्कस करिवि बट फॉर एलाबोरेट डिस्कशन जे कि प्रीवियस क्लास आउथरे देखिबे. क्वेश्चन नंबर 1 कोन कहिछि. Question number 1 कहिछि consider the following statement regarding what regarding appointment of the high court judges. high court judges मानको appointment को नेकी किछटा स्टेटमेंट प्रोवाइड करिछि आ कहिछि करेक्ट आंसर फाइंड करबो. फर्स्ट स्टेटमेंट कहिछि प्रेसिडेंट मस्ट कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करबे आ गवर्नर जोठी तांकर अपॉइंटमेंट हबार थिबो आ सेही रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नर को से कंसल्ट करिवे अपॉइंटमेंट पई. Then second statement कहिछि president is constitutionally bound by the advice of the collegium. Then third statement says appointment process is explicitly defined in the constitution under article 217. ठीक अछि. करेक्ट
आंसर रो कोन हो जो माने प्रीवियस लाइव रे आंसर दे नथले से माने एटी अटेम्प्ट करि परिबे आई एम गिविंग 10 सेकंड्स टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन okay moving on to the answer and explanation correct answer hobo 1 and 3 only first statement kon pe thik kana constitution under article 217 requires consultation with the CJI and governor by who by the president right statement number 2 is wrong collegium is not the constitution not binding constitutionally ठीक स्टेटमेंट नंबर 3 कोन कहै आर्टिकल 217 एटा पूरा ठीक अछि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थिला जो माने पॉलिटी रिवाइज करथिबे से माने इजीली आंसर करि परथिबे त आंसर कोन हबो 1 एंड 3 ओनली सेकंड क्वेश्चन मिशन शक्ति ऊपर क्वेश्चन थिला कि मिशन शक्ति गोटे फ्लैगशिप इनिशिएटिव को गवर्नमेंट रो ओडिसा गवर्नमेंट रो आ तर प्राइमरी फोकस कोन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कि वुमेन एम्पावरमेंट कि ट्राइबल एजुकेशन कि हेल्थ इंश्योरेंस फॉर वुमेन व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मिशन शक्ति एबे रेगुलरली न्यूज रे रोचे इट्स आपको भल से प्रिपेयर करके जाइथिए मु सब क्लास रे करूचे ठीक अछि व्हाट आर टेक्निकल टेक्सटाइल्स टेक्निकल टेक्सटाइल कौन टेक्निकल टेक्सटाइल ऊपर गोटे प्रॉपर करंट अफेयर्स मु एलाबोरेटिव वे रे डिस्क्राइब करिथिली प्रीवियस क्लास रे जो माने अटेंड करिथिबे से माने जानि परथिबे व्हाट आर टेक्निकल टेक्सटाइल्स फर्स्ट टेक्निकल टेक्सटाइल्स यूज्ड फॉर aesthetic and fashion purposes then textiles used for technical and functional application rather than decorative ones केवल डेकोरेशन बा एस्थेटिक पर्पस पई नो तांकर टेक्निकल और फंक्शनल एप्लीकेशन रही छी सी हैंड वुवन गारमेंट्स यूज्ड इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स ऑप्शन नंबर डी कोन कहै छी सिंथेटिक फैब्रिक्स यूज्ड इन स्पोर्ट्स वियर आंसर कोन हो आंसर इज बी ऑब्वियसली स्टेटमेंट रो ही जणा पडु छी टेक्सटाइल्स यूज्ड फॉर टेक्निकल कहना ना रे ही तार टेक्निकल टेक्सटाइल्स अछि टेक्निकल टेक्सटाइल्स and functional application rather than decorative ones technical textile kon they serve specific functional purposes तांकर किछि specific function से माने fulfill करंती like what like insulation filtration हे गला medical use रे भी तांकर यूज वे not for aesthetics केवल decorative purposes पई नो the answer हो b question number 4 with reference to the Paika rebellion in 1817 in Odisha consider the following statements Paika rebellion ऊपर चारोटी स्टेटमेंट देछि आ विदरु कोटा ठीक फर्स्ट स्टेटमेंट कोन कहै छै रिबेलियन वाज लेड बाय बक्सी जगबंधु ये से रिबेलियन को लीड करथिले जे थिले गोटे हेरिडिटरी मिलिटरी कमांडर कोठिकार खोर्धा किंगडम रो वन ऑफ द प्राइमरी कॉज ऑफ द रिबेलियन वाज ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट दैट डिस्पोज्ड द पाइकर्स ऑफ देयर लैंड राइट्स ब्रिटिश पॉलिसी अंडर जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स कैरी होतला से माने से ता द्वारा कोनला पाइको मानको पाखरे जो लैंड राइट्स थिला सेगुडा तगडरो नै नियागला तो थर्ड स्टेटमेंट कोन कहै छै द रिबेलियन हैड नो सपोर्ट फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज वाज रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यूडल मिलिशियास फोर्थ ब्रिटिश recognized it as the first major organized resistance against the colonial rule in India correct statement कोन हो करेक्ट स्टेटमेंट होची 1 आउट 2 बाकी 3 और 4 इनकरेक्ट अछि एठी देखबा स्टेटमेंट 1 कोन पई करेक्ट वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल थिला जे बक्सी जगबंधु ताको लीड करिथिले जे कि कमांडर थिले खोर्धा किंगडम रो एंड इट कॉज्ड बाय लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ कोर्स दैट हर्ट द पाइकर्स थर्ड स्टेटमेंट भूल कोन पई ट्राइबल एंड पीजेंट्स आल्सो सपोर्टेड द रिवोल्ट बट एटी थर्ड स्टेटमेंट कहितला कोन थर्ड स्टेटमेंट कहितले कि द रिबेलियन हैड नो सपोर्ट फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज एंड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यूडल मिलिशियास तो थर्ड स्टेटमेंट एटी भूल हे होछि कि ट्राइबल और पीजेंट्स माने मध्ये ए रिवोल्ट को सपोर्ट करथिले स्टेटमेंट 4 कोन पई भूल द ब्रिटिश डिड नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इट एज द फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस दैट इज अ मॉडर्न क्लेम
एबे सेटा क्लेम करा जाउची कि सेटा होची फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल किंतु ब्रिटिशर्स माने याको ऑफिशियली सेतबळे रिकॉग्नाइज करि नथले कि सेटा ताको अगेंस्ट रे गोटे मेजर रेजिस्टेंस फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस ठीक अछि तो आंसर कोन हो आंसर 1 एंड 2 हो मते भी कमेंट सेक्शन में कहतु मुझे फास्ट फास्ट पढ़ाऊँ कि शुड आई स्लो डाउन अ बिट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 कौन कहछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नीति आयोग रो ए चारोटी मध्यरु कोउटा तार फंक्शन नुए कौन कहछि नॉट अ फंक्शन allocating financial resources to states the b fostering cooperative federalism c कौन कहछि providing strategic and technical advice d कहछि designing long term policy frameworks आ भितरु नीति आयोग रो कोउटा फंक्शन नुए आंसर होची ए नीति आयोग पाखरे सेमती किछि भी पावर नहीं कि फाइनेंशियल रिसोर्सेस से स्टेट मानको बांटी परिबो बा एलोकेट करि परिबो देई परिबो ठीक अछि नीति आयोग डज नॉट एलोकेट फंड्स बट ए पावर टा प्लानिंग कमिशन पाखरे थिला जोटा कि एबे एबोलिश हे सारछि नीति आयोग कहा ऊपर ओनली फोकस करे से ओनली फोकस करे पॉलिसी एडवाइस ऊपर से एडवाइस करिवो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को से प्रमोट करिवो एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऊपर फोकस करिवो तार क्वेश्चन नंबर 6 पोषण ट्रैकर ऊपर क्वेश्चन अछि आ ऊपर करंट अफेयर्स थिला प्रीवियस वीक पोषण ट्रैकर गोटे इनिशिएटिव को गवर्नमेंट प्रोग्राम अंडर रे वेरी इजी क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन नेशनल हेल्थ मिशन अंडर रे बा प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना अंडर रे बा पोषण अभियान बा मिड डे मील स्कीम नारू ही क्लियर ही होउची ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर पोषण अभियान पोषण ट्रैकर होउची गोटे डिजिटल टूल जोटा कि कहा अंडर रे सेटा आसुची सेटा पोषण अभियान अंडर रे आसुची जहार एम होची इंप्रूविंग द न्यूट्रिशनल आउटकम ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन जदि एग्जाम हॉल रे पचारि थिबो कि ओनली चिल्ड्रन ताहले भूल हबो इट फोकसेस बोथ ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑन देयर न्यूट्रिशनल आउटकम्स एबे हमें जिबा आजिरो करंट अफेयर्स जहाँ जहाँ आज हमर पढ़िबार अछि ठीक अछि फर्स्ट फर्स्ट हमें देखिबा भुवनेश्वर लोक अदालत सेटल्स 7 crore in check bounce cases एटा होची न्यूज़ बट as such a news टा important नुहे कि केते क्रोर सेटलमेंट हला कोन हला किए कला बट एटा रेलेवेंस होल्ड करछि अंडर जीएस पेपर 2 ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस रेलेवेंट बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस केमिति फर्स्ट हमें देखिबा कि न्यूज़ रे कोन पाइ अछि न्यूज़ रे या अछि कि अ डिस्ट्रिक्ट लेवल लोक अदालत जोडे गोटे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे हेल्ड हेतिला भुवनेश्वर रे से सक्सेसफुली रिजॉल्व करछि 522 टा चेक बाउंस केसेस आउट ऑफ दिस मच प्रेजेंटेड केते वर्थ 7 point around 7 crore worth रो चेक बाउंस केसेस रिजॉल्व हेछि आ वी इवेंट एम्फसाइज करिछि जो एफिशिएंसी और वैल्यू होल्ड करूछि लोक अदालत एज अ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म ठीक अछि बैकग्राउंड कोन बैकग्राउंड एठी जानिबा बहुत इंपोर्टेंट कि लोक अदालत से माने कहा अंडर रे एस्टैब्लिश हेछथि लोक अदालत से होछथि स्टैट्यूटरी फोरम दे आर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 अंडर रे एस्टैब्लिश हेछथि एटा मने रखिबे कि को एक्ट अंडर रे तांकर एस्टैब्लिशमेंट हेछि लोक अदालत they aim to ensure कौन एंश्योर आगर एम कौन पर्पस कौन से कोहा ऊपर फोकस करछन से माने स्पीडी जस्टिस ऊपर फोकस करंती कि आज जतबे से माने स्पीडी जस्टिस ऊपर फोकस करंती तो ऑटोमेटिकली कोर्ट पेंडेंसी will decrease which is a good thing for the judiciary especially minor civil हेगला criminal compoundable cases हेगला तार स्पीडी जस्टिस केमिति अचीव करबे से माने ता ऊपर फोकस करंती
आउ केस जेमति कि चेक बाउंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट अंडर हेगला ता केसेस मध्ये माने हैंडल करंती एटी हम ब्रीफली देखिबा कि सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 एटा कोन एटा कहा संगे डील करछि इट डील्स विथ द ऑफेंस ऑफ चेक बाउंस केसेस ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स एंड अकाउंट क्लोजर जहां जत्ते भी चेक बाउंस केस अछि ए सेक्शन ए एक्ट अंडर ए जो सेक्शन रही छी ये सेइथरे डील करूची एटा गोटे कंपाउंडेबल ऑफेंस ठीक अछि दिस इज अ कंपाउंडेबल ऑफेंस जदी ऑप्शन रे आसीतिबो कि दिस इज अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस देन नो दिस इज अ कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड हेंस एलिजिबल फॉर लोक अदालत रेजोल्यूशन कहना लोक अदालत केबे भी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस नै परिबनी इट ओनली टेक्स अप द कंपाउंडेबल ऑफेंस आउ एटा कहा अंडर रे ऑपरेट करछि इट ऑपरेट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटीज एलएसएस जहां अंडर से एस्टैब्लिश हेछि तो लीगल सर्विस अथॉरिटीज का सुपरविजन रे से फंक्शन करूछि कोठी नेशनल स्टेट आउ डिस्ट्रिक्ट लेवल रे क्लियर लोक अदालत विषय हम टिके देखिबा लोक अदालत रा माने कोन लोक अदालत माने कोन लोक माने कोन पीपल लोक एंड अदालत माने कोन कोर्ट सो इट इज एन एडीआर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेकानिज्म एडीआर रा फुल फॉर्म होची अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेकानिज्म और एटा कोथ पई लोक अदालत एस्टैब्लिश हुए टू सेटल डिस्प्यूट एमिकेबली विदाउट स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल और एविडेंशियरी लॉज कोर्ट रे जो स्ट्रिक्ट प्रोसीजर और एविडेंशियरी लॉज फॉलो होची सेटा ताकू छाडी कि केमिते डिस्प्यूट गुडा को आराम से सॉल्व हे परिबो और स्पीडी डिस्पोजल तंकर हे परिबो सेटा होची लोक अदालत रो एम एज एन अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेकानिज्म टाइप्स केतरा थाए गोटे होची परमानेंट लोक अदालत नेशनल मेगा एंड मोबाइल लोक अदालत परमानेंट लोक अदालत एटा कोथ पई कि एस्टैब्लिश हुए फॉर्म हुए पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज पई जेमि ट्रांसपोर्ट हे गला पोस्टल हे गला टेलीग्राफ हे गला देन नेशनल लोक अदालत आसुची जोडा कि अक्रॉस कंट्री एटा फंक्शन करे ऑन अ सिंगल डे इट हेल्ड अक्रॉस द कंट्री ऑन अ सिंगल डे मेगा लोक अदालत कोन एटा होची स्टेट वाइड अक्रॉस ऑल कोर्ट्स मोबाइल लोक अदालत कोन conducted at various places to spread legal awareness आरो काम होची legal awareness spread करिया मोबाइल लोक अदालत रो काम एडवांटेज कोन लोक अदालत तो कॉन्स्टिट्यूट होची बट तार एडवांटेज कोन जते बळे स्पीडी डिस्पोजल होची केसेस रो तो तार कोनटा प्रभाव पड़ची लोक मान ऊपर व्हाट आर द एडवांटेजेस स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस ऑफ कोर्स एंड कॉस्ट इफेक्टिव एथिरे किछि भी कोर्ट फी सेतरे पड़े नहीं माने पैसा दबा को पड़िबो नहीं अब जदी भी कोर्ट फीस ऑलरेडी दिया सरी जी सेटा रिफंड हे जिवो आ ये जहां भी डिसीजन नबो सेटा होची बाइंडिंग माने बाध्यता ऊपर एक्ट करबा इट ट्रीटेड एज अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट जेते बळे स्पीडी डिस्पोजल होची जेते बळे कॉस्ट इफेक्टिव मध्ये अछि तो एथिरे कोन होबो जो कोर्ट्स मानन को ऊपर हाई कोर्ट हैला सुप्रीम कोर्ट हैला एमान को ऊपर जो केसेस पेंडिंग अछि जदि लोक अदालत से थ्रू बहुत बड़े केसेस से स्पीडीली सॉल्व कर दोची ताहले जुडिशियल पेंडेंसी विल डिक्रीज it will reduce the burden on regular courts fifth it promotes amicable settlements and restorative justice accessible को माने को पई to people at grassroots levels including rural area रे जो माने अछनी और जो माने disadvantaged groups women हे गले tribal people ए माने को पई etc all clear ऑडियो आसुची ठीक से एटा हो जो होमवर्क आपको एठी अटेम्प्ट करि परिबे कमेंट सेक्शन रे नहले रिकॉर्डेड सेक्शन जदी देखिबे ताको कमेंट सेक्शन रे आंसर करिवे क्वेश्चन कोन कहै छी क्वेश्चन लोक अदालत ऊपर अछि एबे मु कहली चारटा जगह स्टेटमेंट को केयरफुली पढिबे देन करेक्ट आंसर देबे फर्स्ट स्टेटमेंट कोन कहै छी लोक अदालत कैन पास बाइंडिंग डिसीजन इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज सेकंड कहै छी नो अपील लाइज अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ लोक अदालत जहां भी डिसीजन दबो ता अगेंस्ट किछि भी कोनोसी कोर्ट को तमे आपण अपील करि परिबेनी आ एटा कहा अंडर रे प्रोवाइड हेछि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 अंडर रे प्रोवाइड हेछि
Permanent Lok Adalat have jurisdiction over public utility services and can adjudicate dispute even when parties do not reach a settlement. एबे मु पढैली परमानेंट लोक अदालत कोन लोक अदालत कैन टेक अप क्रिमिनल केसेस इन्वॉल्विंग ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 2 years. करेक्ट आंसर देबे एडी चैट रे करेक्ट आंसर दियंतु नले जो माने रिकॉर्डेड देखिबे से माने कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर देबे एबे जवन नेक्स्ट करंट अफेयर्स को नेक्स्ट कोन कहै ओडिसा रे गोटे रेनबो प्राइड वॉक हेची 2025 रे आ एटा न्यूज़ रे कोन पई अछि इट फॉल्स अंडर द GS2 सोशल जस्टिस मेंस पई एटा इंपोर्टेंट एटा को एग्जांपल एज एन एग्जांपल कोट करि परिबे जेतबेले सोशल जस्टिस ऊपर किछि क्वेश्चन आसीबो डिस्पाइट हेवी रेन्स hundreds from the LGBTIQA++ community and allies पार्टिसिपेट कोथरे करले ओडिसा रेनबो प्राइड वॉक 2025 भुवनेश्वर रे से माने पार्टिसिपेट करथिले आउ ये इवेंट ऑर्गेनाइज हेथिला बाय मल्टीपल सिविल सोसाइटी ग्रुप्स आउ एटा गोटे सेलिब्रेशन थिला कहार जेंडर और सेक्सुअल डाइवर्सिटी पई गोटे सेलिब्रेशन थिला जे डिमांड करूचंदी इक्वल राइट्स डिग्निटी ताक पई एंड inclusion where in the mainstream society. बैकग्राउंड कौन गेला फर्स्ट प्राइड वॉक ओडिसा रे केबे हेतला 2009 रे हेतला जोटा कि बिगिनिंग को दर्शैतला LGBTIQA प्लस रो विजिबिलिटी स्टेट रे जो माने अछंती की माइलस्टोन्स इन LGBTIQA राइट्स इन इंडिया these you can use all the three as examples in social justice mains question जदि जजमेंट किसी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स सेक्शंस बा किसी कोर्ट रूलिंग्स जदि सप्लीमेंट करि देबे ना आंसर रे तो एटा गोटे बहुत भलो इंप्रेशन क्रिएट करे कि कैंडिडेट पाखरे 360 डिग्री रो नॉलेज अछि पर्टिकुलर टॉपिक को नेकी am I clear फर्स्ट होची नालसा जजमेंट 2014 रे कोन कहितला सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज करतला ट्रांसजेंडर पर्सन मानो को एज अ थर्ड जेंडर ठीक अछि आ अफर्म करतला कहितला कि सेमानकर मध्ये सेल्फ आइडेंटिटी पाई कि सेमाने मध्ये निजको सेल्फ आइडेंटिफाई करि परिबे दे हैव द राइट टू सेल्फ आइडेंटिफाई कि सेमाने को जेंडर अंडर रे फॉल करछ सेक्शन 377 वर्डिक्ट जोटा आसला 2018 रे सेतर सुप्रीम कोर्ट रे एटा रूल थिला कि सेम सेक्स रिलेशनशिप को डीक्रिमिनलाइज करा जाओ आगु सेटा गोटे क्रिमिनल ऑफेंस थिला किंतु 2018 रे तो डीक्रिमिनलाइज कर दिया गला थर्ड ओडिशा हाई कोर्ट रूलिंग्स अफर्म्ड ट्रांसजेंडर एंड क्वियर राइट्स लाइक कोहैबिटेशन हे गला प्रोटेक्शन हे गला एक्सेस टू फैमिली पेंशन्स हे गला से माने ए सब राइट्स एक्सरसाइज करि परिबे किसी इंपोर्टेंट कीवर्ड्स ऊपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी देखि देबा LGBTIQA++ एटा गोटे इंक्लूसिव टर्म कहा पई आर फुल फॉर्म कोन लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर इंटरसेक्स क्वियर और क्वेश्चनिंग एसेक्सुअल एंड अदर नॉन हेटेरोनॉर्मेटिव आइडेंटिटीज एटा मने रखिबे पर लेटर को जिंस को तार फुल फॉर्म कोन नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 रे जो केस हितला इट रिकॉग्नाइज्ड जेंडर आइडेंटिटी एज इंटीग्रल टू इंडिविजुअल डिग्निटी ग्रांट करितला लीगल रिकॉग्निशन टू थर्ड जेंडर टू ट्रांसजेंडर्स और गवर्नमेंट को डायरेक्ट करतिला टू एंश्योर वेलफेयर मेजर्स को मानक पई जो माने थर्ड जेंडर्स रहले ट्रांसजेंडर्स रहले से मानक सेक्शन 377 आईपीसी अंडर रे जोटा कि 2018 रे एटा को आगु एटा क्रिमिनलाइज थिला देन सुप्रीम कोर्ट रूलिंग अंडर नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रे एटा को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गला ठीक अछि एंड इट अफर्म्ड upholding the right to privacy dignity and equality for transgenders गवर्नमेंट रो कोन कोन स्कीम रही छी ट्रांसजेंडर्स मानन को नेकी से पर्टिकुलर सेक्शन
तांकु नेकी स्वीकृति स्कीम रही ओडिशा रो जे कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करूची, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करूचंदी और शेल्टर प्रोवाइड करूचंदी फॉर ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स। स्माइल स्कीम रही सेंट्रल गवर्नमेंट रो जे कि रिहैबिलिटेशन सुविधा प्रोवाइड करूचंदी, शेल्टर होम्स प्रोवाइड करूचंदी जहा को कुआ जाउची गरिमा गृह। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंटेशन रे हेल्पफुल रहउची ए स्कीम टा। स्किल डेवलपमेंट मध्य होची स्कीम अंडर रे फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। क्लियर? एडवांटेजेस और सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइड वॉक्स। जो प्राइड वॉक टा ओडिशा रे कंडक्ट होईची तार सिग्निफिकेंस कोन, एभलिया कैंपेन एभलिया इनिशिएटिव नेले कोनटा आर प्रभाव पड़ुची लोक मानको ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल सेमानको विजिबिलिटी मिलुची, ट्रांसजेंडर लोक मानको सेमानको विजिबिलिटी मिलुची एंड रिप्रेजेंटेशन मिलुची फॉर मार्जिनलाइज्ड जेंडर्स एंड सेक्सुअलिटीज। ब्रेकिंग सोशल टैबूज, सोसाइटी रे जहाँ भी टैबू रही, मिथ्स रही सेमानको नेकी, जहाँ भी स्टीरियोटाइप्स रही, जहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन होची सेमानको अगेंस्ट रे, इट ब्रेक्स दैट। एमितिया इनिशिएटिव कंटिन्यूअसली निया गले इट विल ब्रेक द सोशल टैबू एंड स्टीरियोटाइप्स। थर्ड, it promotes constitutional values of equality, dignity and liberty. I have discussed before. Fourth, facilitates policy dialogue and stakeholder engagement. Acts as a platform for community bonding and solidarity. थर्ड हमें देखिबा GS3 अंडर रे ए टॉपिक टा अछि ऑफ एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक। बोथ ए टॉपिक टा बोथ अंडर रे आसी परिबो। एनवायरनमेंट अंडर रे भी क्वेश्चन फ्रेम हे के आसी परिबो, अंडर साइंस एंड टेक अंडर रे मध्ये क्वेश्चन आ ऊपर फ्रेम हे के आसी परिबो। एंड दिस टॉपिक इज इट इज पर्टिकुलरली रेलेवेंट फॉर मेंस। तो सही पर्सपेक्टिव रे हमें टॉपिक टा को पढिबा। फर्स्ट टॉपिक कौन कही? एक्सपर्ट्स अर्ज रेस्पॉन्सिबल लिविंग एंड डिजिटल इनोवेशन इन कंजर्वेशन। कंजर्वेशन रे रेस्पॉन्सिबल लिविंग आउ डिजिटल इनोवेशन केमिति गोटे रोल प्ले करूचंदी, एक्सपर्ट अर्ज फॉर दैट। व्हाई इन न्यूज़ जो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट हेतिला 28 जुलाई 2025 रे ओडिशा होस्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपर्ट लेड डिस्कशन। हाइलाइट कौन हेतला डिस्कशन अंडर को टॉपिक्स हाइलाइट हेतला? फर्स्ट हाइलाइट हेतला कि डिजिटल इनोवेशन रो कोन रोल रहउची कंजर्वेशन रे, देन सस्टेनेबल और रिस्पांसिबल लिविंग कोन पई दरकार कंजर्वेशन पई की, और रिच और फ्रेजाइल बायोडायवर्सिटी को केमिति कंजर्व करबे ता ऊपर मध्ये डिस्कशन हेतला। दिस टॉपिक इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट फॉर एसे एज वेल। कहीं जदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ एनालाइज समस्ते मेंस रो करिथिबे ताहले देखिथिबे कि एसे रे एनवायरनमेंट ऊपर एसे सब बेले रहउची, फ्रीक्वेंटली रहउची एनवायरनमेंट ऊपर एसे। तो एटा एसे पर्सपेक्टिव रो भी इंपोर्टेंट हे जाउची कि रेस्पॉन्सिबल लिविंग और डिजिटल इनोवेशन को केमिति कनेक्ट करा जाई परिबो कंजर्वेशन संगे। और ये इवेंट कहा द्वारा ऑर्गेनाइज हेतला? स्कोप्स द्वारा ऑर्गेनाइज हेतला, कोलैबोरेशन विथ SWA यूनिवर्सिटी एंड Indian Meteorological Survey and others, both paying to raise awareness and promote action for conservation. Background कौन? World Nature Conservation Day जोड़ा observe हेतला केबे 28 जुलाई रे, जोड़ा every year 28 जुलाई रे observe हुए, both paying to promote awareness about conserving natural resource conserve करिया पई, biodiversity preserve करिया पई और sustainable living को encourage करिया पई। ओडिशा जेहेतु गोटे इकोलॉजिकल डाइवर्स स्टेट, या पाखरे कोस्टलाइन्स अच्छी, फॉरेस्ट अच्छी, वेटलैंड्स अच्छी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्स स्टेट मानकु से माने दे आर हाईली सेंसिटिव एंड दे आर आल्सो वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज एंड हैबिटेट लॉस। 2025 रे थीम कोन थिला? 2020 थीम बहुत मने रखुथिबे, दिस इज इंपोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ठीक अछि, तो थीम कोन थिला? कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। कीवर्ड सेठी देखिदेबा जहा जहा न्यूज रे यूज हेछि, जेंति कि बायोडायवर्सिटी यूज हेछि। बायोडायवर्सिटी माने कोन? जेते वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स अछि, जेंति प्लांट्स हे गले, एनिमल हे गले, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्लोरा फौना एटसेट्रा, जहा हमें पढुचे ता अंडर रे। एसेंशियल कोथि पई? एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज पई कि क्लाइमेट रेगुलेशन आ सस्टेनेबल लाइवलीहुड पई। डिजिटल इनोवेशन केमिति कंजर्वेशन संगरे आकु
डिजिटल इनोवेशन केमिति कंजर्वेशन पाई की हेल्पफुल हे परिबो फर्स्ट ऑफ ऑल एआई को यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कोथि यूज कर पारे जंती स्पीसीज मान को मूवमेंट को प्रेडिक्ट करी हबो कोठी कोन हंटिंग होची इलीगल हंटिंग होची बा किलिंग होची पोचिंग होची बा तार रिस्क मध्य रही को एरिया रे ताकू मध्य प्रेडिक्ट करी हबो थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीआईएस जोड़ा होची जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम रे कोन हुए मैपिंग हुए आ मॉनिटरिंग हुए थ्रू मैपिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ व्हाट फॉरेस्ट कवर हे गला वेटलैंड्स हे गला बा कोस्ट लाइन जहाँ भी बायोडाइवर्सिटी रही जो मानकर कंजर्वेशन इंपोर्टेंट तार जदि मैपिंग और मॉनिटरिंग ठीक टाइम रे होतिबो ताहले जहाँ भी इलीगल एक्टिविटीज रोची बा इलीगल कंस्ट्रक्शंस रोची किलिंग पोचिंग हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जहाँ भी होची ताको टैकल करा जाय परिबो देन थर्ड रिमोट सेंसिंग लैंड यूज चेंजेस और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को डिटेक्ट करबा पई रिमोट सेंसिंग बहुत इंपोर्टेंट मोबाइल एप्स मध्य एथरे हेल्पफुल हे परिबे फॉर एग्जांपल सिटीजन साइंस पई सिटीजन मानको को अवेयरनेस प्रोवाइड करिया पई स्पीसीज मानको को स्पॉट करिया पई को हैबिटेट रे को एरिया रे केते स्पीसीज अछंती तांगर वैरायटी कोन एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग पई क्लियर कार्बन फुटप्रिंट कोन गोटे छोटिया कांसेप्ट एठी हमें देखिबा एक्स्ट्रा व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट कार्बन फुटप्रिंट होची जेति के ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होची एटमॉस्फेयर को सेटा डायरेक्टली हेथाउ बा इनडायरेक्टली हेथाउ जहां भी इंडिविजुअल मानक द्वारा एटा एमिट हेथाउ बा ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हेथाउ कि प्रोडक्ट द्वारा हेथाउ टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस दैट आर एमिटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द एटमॉस्फेयर और द एनवायरनमेंट ताकू कुआ जाउची कार्बन फुटप्रिंट आ कार्बन फुटप्रिंट को कमा हेले कोन हो जो क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट्स जो रहउची ताकू रिड्यूस करि परिबा क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट्स सच एज कौन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एटा गोटे क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट हे परिबो सी लेवल राइज जहाँ भी क्लाइमेट एक्सट्रीम्स जोड़ा कि नॉर्मल नुह आपण देखुछंती ताकू रिड्यूस करियबो बाय रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट बाय रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैसेस क्लियर समस्त को बुझी होची समस्त बुझी परछंती एडवांटेजेस कोन टेक ड्रिवन कंजर्वेशन जो हबो तर एडवांटेजेस कोन रियल टाइम मॉनिटरिंग रहइबो रियल टाइम मॉनिटरिंग एला मैपिंग एला को मानकर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंडीशंस रो तो सेतरे कोन हबो कंजर्वेशन स्ट्रांग हबो बेटर डिजास्टर फोरकास्टिंग हे परिबो फॉर एग्जांपल वाइल्ड फायर्स से गला किछि भी नेचुरल डिजास्टर से ला बेटर डिजास्टर फोरकास्टिंग एले बेटर रिहैबिलिटेशन हे परिबो आउ सेमती मेजर्स बेटर मेजर्स निया हे परिबो बिफोर डिजास्टर्स enables data driven decision making for policy makers जो माने पॉलिसी मेकर्स अछंती जो माने एग्जीक्यूटिव अछंती जो माने पॉलिसी फॉर्म करछंती फॉर्मुलेट करछंती फॉर कंजर्वेशन पर्पसेस जदि ए सब डाटा तांको पाखरे थिबो तो से माने बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेट करि परिबे फॉर फर्दर कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बायोडायवर्सिटी देन फोर्थ कोन कहि छी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वाया मोबाइल प्लेटफॉर्म्स जे कहली कि थ्रू एआई एंड मोबाइल एप्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रमोट हे परिबो देन सिटीजन माने अवेयर हे परिबे makes conservation education engaging and accessible clear next current affairs transforming villages TPSODL expands model GP initiative हमें आप पढ़िबा डा कोन elaborate करी फर्स्ट ऑफ ऑल देखिबा कोथि पई एटा रेलेवेंट इट इज रेलेवेंट फॉर जीएस पेपर 2 गवर्नेंस प्रीलिम्स एंड मेंस and why it is in news it is in news because the TP Southern Odisha Distribution Limited ये कौन करछि ये एक्सपैंड करछि तार मॉडल ग्राम पंचायत इनिशिएटिव जोटा जीपी इनिशिएटिव भी कहउछंती 14टा मोर ग्राम पंचायत को
एटा एक्सपैंड हेची ए इनिशिएटिव टा एबे टोटल केतेना मॉडल जीपीस अछन 127 टा 14 टा को ऐड करके 127 टा मॉडल जीपीस एबे अछन अक्रॉस 8 डिस्ट्रिक्ट्स 8 टा डिस्ट्रिक्ट रे इन सदर्न ओडिशा ए इनिशिएटिव रो एम कोन to provide reliable, safe and consumer focused power distribution services in rural areas. Rural areas रे consumer focused electricity बा power distribution services provide करिया राइट ग्राम पंचायत ऑडियो क्लियर अछि ग्राम पंचायत कोन व्हाट इज ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत होची ग्राम इट इज अ लोएस्ट टियर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो पीआरआईज रहिले ग्राम पंचायत होची तार बेस बा जो टियर रोची इट इज इट्स बेस्ड और द लोएस्ट टियर सेकंड रेस्पॉन्सिबल कोथ पे कि जहां भी बेसिक सर्विसेज रहिला रूरल एरियाज लोक मानको प्रोवाइड करिया कहला ताको डेवलपमेंट पई तो सेगुडा को प्रोवाइड करबा होची यार रेस्पॉन्सिबिलिटीज रेस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक सर्विसेज एंड रूरल डेवलपमेंट इन विलेज एडा कहा अंडर रे कॉन्स्टिट्यूट हेतला को एक्ट अंडर रे 73rd अमेंडमेंट एक्ट अंडर रे जीपीस हैव बीन गेट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ताको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलिला under which act under 73rd amendment act background kon a particular jo distribution limited this is a joint venture between Tata Power and government of Odisha ro eta gote joint venture model gram panchayat program kon eta launch ke beitla as a part of this mission TPSODL's mission a mission under eta gote part कोथ पई कि एटा लॉन्च हेतला टू एनहांस रूरल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कस्टमर मानकर सैटिस्फैक्शन पई कि आ डिजिटल एंगेजमेंट पई ए पर्यंत 2 लाख रु मध्ये अधिक लोक आ अंडर रे बेनिफिट हे सरलेनी से मानको पावर रिलायबिलिटी मिल सरलानी डिजिटल सर्विसेज मध्ये प्रोवाइड हेची सेफ्टी प्रोवाइड हेची आ जदि ए सब सर्विस ताको मिलु नथियो बा कोनोसी ग्लिचेस थिबो टेक्निकली तो आ अगेंस्ट रे ग्रीवेंस रिड्रेसल मेकैनिज्म मध्ये अछि से माने कंप्लेंट भी करि परिबे तो ए पावर मध्ये ताको दिया जायछि व्हाट आर मॉडल ग्राम पंचायत व्हाट इज मॉडल ग्राम पंचायत होछि गोटे रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ठीक अछि जोडा कि अपग्रेड हेची इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस क्वालिटी पाई कम्युनिटी एंगेजमेंट पाई पर्टिकुलरली इन पब्लिक यूटिलिटीज आ अंडर रे कोन कोन इंक्लूड रहउची रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंक्लूड रहउची बिलिंग केमती डिजिटाइज्ड बिलिंग रहिबो एंड मीटर रीडिंग मध्ये इंक्लूड रहउची न्यू कनेक्शन फैसिलिटेशन इंक्लूड रहउची एफिशिएंट ग्रीवेंस रिड्रेसल मेकैनिज्म मध्ये लोक माने कंप्लेन करि परिबे ड्यू टू इनकन्वीनियंस जदि तम किछि इनकन्वीनियंस होची देन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कैंपेन्स मध्ये कंडक्ट होची डिजिटल एंड कंज्यूमर अवेयरनेस मध्ये स्प्रेड होची एडवांटेज कोन ए पर्टिकुलर इनिशिएटिव रो व्हाट इज द एडवांटेज और सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव एटा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करूची बाय प्रोवाइडिंग स्टेबल पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बा पावर सप्लाई को प्रोवाइड करिकी तो सेथिरे कोन होची जदि जेतेबेले पावर सप्लाई कांस्टेंट रहउची तो बेटर एजुकेशन फैसिलिटेट होबा हेल्थ भलो रहइबो हॉस्पिटल्स माने करे हॉस्पिटल्स माने करे जदि सब बेले 24/7 पावर सप्लाई नथिबो तो ताहले सेठी डॉक्टर्स और नर्सेस माने जो बस सेठी जहां भी मशीन्स अछि पेशेंट्स माने बेटर सर्विस पाई परिबेनी हॉस्पिटल्स तो इट प्रमोट्स हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग कंटीन्यूअस पावर सप्लाई आउ बिजनेस आउटकम मध्य भलो रहइबो जदि 24/7 गोटे एरिया रे पावर सप्लाई रहिछि ताहाले सेठी इन्वेस्टमेंट बढ़िबो इंडस्ट्री बढ़िबो जॉब्स क्रिएट हबो पोवर्टी रिड्यूस हबो ठीक अछि देन डिजिटल एम्पावरमेंट होछि एते एटा कोन प्रमोट करछि इट प्रमोट्स द यूज ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज
जेमति कि एठी मु कहली डिजिटाइज्ड बिलिंग हैला मीटर रीडिंग हैला एटा को से प्रमोट करू त ऑनलाइन सर्विसेज को प्रमोट करू आ मोबाइल एप्स को प्रमोट करू कोथ पई as I have said बिलिंग पई कंप्लेंट्स पई अवेयरनेस पई और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एथरे इंक्रीज होची अराउंड व्हाट अराउंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी आ कंज्यूमर माने मध्ये से माने जानु छथि कि तांकर राइट्स कोन अबाउट दिस सर्टेन और पर्टिकुलर थिंग ग्रीवेंस रिड्रेसल मध्ये से माने आराम से करि करछथि जोटा कि कोन ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी बिल्ड करूची बिटवीन द whom governed and the governing correct through prompt resolution mechanisms scalable model एटा can be replicated in other states बाकी स्टेट मानक मध्ये एटा replicate हे परिबो ए मॉडल टा tailored to their needs by other discoms कोन distribution companies then हमें पढ़िबा Odisha's rising tiger numbers bring pride and challenges कहा अंडर ये टॉपिक टा आसुची इट कम्स अंडर एनवायरनमेंट ऑफ जीएस पेपर 3 रेलेवेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस न्यूज रे कोन पई अछि इंटरनेशनल टाइगर डे जोटा गला 29 जुलाई 2025 रे ओडिसा रिपोर्ट करिछि कोन कि तार टाइगर नंबर्स रे इंक्रीज हेछि स्पेशली कोडी सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व रे जोठी की टाइगर पॉपुलेशन 27 रु एबे 40 टा हे जाइछनी इंक्लूडिंग रेयर स्यूडो मिलानिस्टिक टाइगर्स while this brings national pride it also raises serious conservation challenges related to poaching habitat fragmentation and human wildlife conflict eta thila news ebe तार हमें बैकग्राउंड देखिबा फर्स्ट हमें देखिबा प्रोजेक्ट टाइगर कोन प्रोजेक्ट टाइगर केबे लॉन्च हितला प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हितला 1973 रे कहा द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एम कोन प्रोजेक्ट टाइगर रे जेतेबे ए टाइगर प्रोग्राम ता लॉन्च हितला एम कोन थिला एम थिला कि टाइगर मानकर कंजर्वेशन रहबो इन डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व्स improving their habitats, reducing human pressure and strengthening anti-poaching measures. एबे देखिबा बैकग्राउंड कोन न्यूज रो इंडिया रे 70 over 70% टाइगर्स अछंती of the global wild tiger population with 3682 tigers as per the latest census. ए डेटा ना मने रखिबे इंटरनेशनल टाइगर डे केबे ऑब्जर्व होची 29 जुलाई रे ऑब्जर्व होची कोथ पई कि टू रेज द अवेयरनेस अबाउट टाइगर कंजर्वेशन सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व जोटा अछि जोटा कि ओडिसा रो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे अछि एटा वन ऑफ द ओल्डेस्ट और मोस्ट बायोडाइवर्स टाइगर हैबिटेट ऑफ ईस्टर्न इंडिया ऑल ओडिसा टाइगर एस्टिमेशन जोटा कंडक्ट हेतला 2023 रो 2024 रे कंफर्म करतला कि 27 टा एडल्ट टाइगर अछंती 8 टा छुआ अछंती तांकर 8 कब्स कोडी सिमिलीपाल प्लस 3 अदर आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज स्यूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स कोन एटी न्यूज रे गोटे टर्म मेंशन हेची गोटे होची स्यूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स एबे यार माने कोन एटा होची गोटे रेयर जेनेटिक वेरिएंट बाहर रॉयल बेंगल टाइगर्स मानक भीतर एटा देखा जाय आ तांको भीतर एटा गोटे रेयर जेनेटिक वेरिएंट विथ हेवीली स्ट्राइप्ड ब्लैक फर टाइगर्स मानकर जो स्ट्राइप्स रोची जो ब्लैक स्ट्राइप्स रोची एटा हेवीली स्ट्राइप्ड ए जो स्ट्राइप्स रे तांकर जो फर रोची जो रूमर रोची एटा हेवीली स्ट्राइप्ड इन केस ऑफ स्यूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स than the other royal bengal tigers eta hoche takar ଗୋଟେ distinctive feature giving them almost fully black appearance se mane duraru but se manku almost mane black hi dekha janti it gives a fully black appearance similipal hoche emiti gotie only natural habitat world रे पूरा world रे जोठी ए टाइगर माने देखा जाती को माने pseudomelanistic tiger एबे टाइगर कोन टाइगर रिलेटेड हम न्यूज़ पढुचे तो टाइगर कॉरिडोर्स हमें देखिबा टाइगर कॉरिडोर्स एटा होछि इकोलॉजिकल पाथवे जेटा कहा को कनेक्ट करे एटा जो इकोलॉजिकल पाथवे सेटा कनेक्ट करे टाइगर हैबिटेट्स इट कनेक्ट्स द टाइगर हैबिटेट्स कोथि पई कि एटा कनेक्ट एटा टाइगर कॉरिडोर्स बनाई छी टू अलाउ द सेफ मूवमेंट फ्रॉम हैबिटेट टू हैबिटेट ताकर सेफ मूवमेंट को प्रमोट करिया पई Second, essential to prevent inbreeding and ensure genetic diversity. Advantages कौन? Tigers का number बढ़िले advantages बा significance कौन? एटा गोटे ecological indicator. Tiger होचनी गोटे apex species. ठीक अछि एमानकर जदि numbers बढ़िबो त एटा indicate करे कि ecosystem healthy अछि. Tourism potential मध्ये increase होछि एतरे एटा promote कोन करछि? Ecotourism promote करछि आ livelihood opportunities मध्ये promote करछि. साइंटिफिक इंपोर्टेंस रही जेमति कि रेयर स्यूडोमेलानिस्टिक टाइगर्स हला
से माने केवल एथरे सिमिलीपल रे देखा दउछन से एटा कोन प्रमोट करि परिबो रिसर्च एंड कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज प्रमोट करि परिबो सो साइंटिफिक इंपोर्टेंस पदे रहउची नेशनल प्राइड भी रहउची इट स्ट्रेंथन्स द इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैलेंजेस कोन रहउची बा डिसएडवांटेज कोन रहउची जेमति कि पोचिंग हे गला इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हे गला जोडे कि एबे भी स्टिल इट इज very much rampant due to high market value तांकर फर पाई हे गला बोन पाई हे गला टीथ पाई हे गला हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन होउची तांकर टाइगर मानकर जोठी से माने रहउछन तांकर जो नेचुरल हैबिटेट रहिछि सेठी डिफोरेस्टेशन होउची गछ कटा जाउची बा इलीगल माइनिंग होउची बा सेठी इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट प्रॉपर एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट सेठी इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज मध्ये से कॉरिडोर्स रे कैरी आउट होउची फॉर एग्जांपल केउंझर सुंदरगढ़ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मध्ये होउची द हैबिटेट डिस्टर्ब तांकर कले कोन हबो से माने अर्बन एरियाज को पळे आछछन्ती तो एटा कोन करूची ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट करूची लाइफ स्टॉक प्रेडेशन विलेज इनकर्शंस मॉब किलिंग्स ऑफ टाइगर्स ओके इट रिफ्लेक्ट राइजिंग टेंशंस वीक प्रोटेक्शन इन अदर रिजर्व्स सातकोसिया हे गला सुनाबेड़ा देब्रीगढ़ ए मानकर प्रोटेक्शन एते स्ट्रांग नहे इट इज नॉट वेरी स्ट्रांग so conservation efforts ethi कम रही low prey density affects tiger reproduction and forces tiger to seek food near human habitat जतबे habitat disrupt होची बे destroy होची जो बाकी स्पीसीज माने अछथि से जंगल रे बा से habitat रे से मानकर नंबर्स कोन होची से मानकर धर फॉर एग्जांपल जदि से habitat रे ड्यू टू habitat destruction बा illegal poaching deers मानकर नंबर्स जदि डिक्रीज कला तो टाइगर्स माने कहा ऊपर प्रे करंती कहा शिकार करंती डियर्स माने को शिकार करंती along with other species of course but here as an example we are talking about deers तो जदि डियर्स मानकर संख्या जदि कमे ताहले से मानको शिकार मिलिबनी से मानको फूड मिलिबनी तो सेतरे कोन हबो इट अफेक्ट्स टाइगर्स रिप्रोडक्शन आ जतबे ताको फूड मिलिबनी तो पाखा बाकी जहां भी ह्यूमन हैबिटेट थिबो अर्बन एरियाज थिबो ह्यूमन सेटलमेंट्स थिबो से माने सेठी की पळाइबे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ी जिवो ड्यू टू लो प्रे डेंसिटी तो वे फॉरवर्ड कोन हबा दरकार वे फॉरवर्ड हबा दरकार फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्ट्रेंथन द एंटी पोचिंग लॉज जहां भी इलीगल पोचिंग रोजी हंटिंग रोजी तो सेति में पेनल्टीज फास्ट ट्रैक वाइल्ड लाइफ कोर्ट्स एस्टैब्लिश हबा दरकार टेक बेस्ड सर्वेलेंस इन द ड्रोन्स थ्रू एआई कैमरा ट्रैप्स एटा हबा दरकार टू मॉनिटर द पोचिंग और लॉज थिबा दरकार टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ द स्पीसीज रिस्टोर टाइगर कॉरिडोर्स स्पेशली इन ईस्टर्न इंडिया जेमि सिमिलीपाल हैला सातकोसिया हैला एटी कोन होची एटी सेमि स्ट्रांग कंजर्वेशन एफर्ट्स किसी कैरी आउट होना देवरीगढ़ हे गला एंड नियर बाय छत्तीसगढ़ झारखंड फॉरेस्ट एटी टाइगर कॉरिडोर्स को जदि रिस्टोर करा जिवो कंजर्वेशन एफर्ट्स को जदि स्ट्रेंथन करा जिवो ताहले टाइगर्स मानकर संख्या आउरी बढ़िबो थर्ड प्रे बेस ऑगमेंटेशन जेमि डियर हेले वाइल्ड बोर हेले जो मान को ऊपर टाइगर माने फीड करंती बा एपेक्स कार्निवोर्स माने फीड करंती हर्बिवोर्स हे गले थ्रू हैबिटेट एनरिचमेंट by not doing habitat destruction fourth community based conservation जेमि कि livelihood provide करवा हे गला education हे गला relocation support हे गला to reduce conflict awareness and drive लोक मान को मध्य रे carry out करा जिबा दरकार to target community hostility especially in buffer zones where mob attacks on big cats are rising ए सब जिंस परस्पर प्रति इंटीग्रेटेड जेमति कि जदि एठी हैबिटेट डिस्ट्रॉय होची बोथ प्रे और एपेक्स प्रेडेटर ए माने अफेक्ट होचंदी प्रे संख्या कमुची और ए माने कोन करचंदी फूड नथिबारो जो बफर एरियाज रे कोर एरियाज रो बाहर के बफर एरियाज को जाउचंदी ह्यूमन सेटलमेंट को जाउचंदी तो कम्युनिटी हॉस्टिलिटी बढ़ुची से माने मारी दोचंदी द मॉब किल्स टाइगर्स तो एथिरे कोन हबो ताकर संख्या कमिबो तो अवेयरनेस ड्राइव प्रोग्राम्स जदी हबो ए जिंसटी हबो नै पॉलिसी एंड बजट फोकस अंडर यूटिलाइज्ड रिजर्व जेंति सुनाबेडा हैला देब्रीगढ़ हैला सेगुडा को प्रायोरिटाइज एबे करिवार टाइम आसीची पॉलिसी आउ प्रॉपर बजट एलोकेट हबा दरकार फॉर देयर कंजर्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 ऑन प्रोजेक्ट टाइगर समस्त आंसर करिवे एबे लाइव चैट रे with reference to project tiger consider the following statements चारटा स्टेटमेंट को एठी देछि
गोटे कहि प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हेतला इन दिस ईयर आउ एम होची तार ensuring viable population of Bengal tigers in their natural habitats. NTCA गोटे statutory body को ministry under रे Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Project Tiger allow करे it also allows the relocation of forest dwelling communities from core areas to purely voluntary basis on a purely voluntary basis. Fourth statement, tiger reserves under Project Tiger to tiger reserves सेमाने list है Project Tiger under रे they are notified under this act, Wildlife Protection Act. को statement correct अछि. Answer will be discussed in next session. Moving on. Odisha used this much 87.9% of the CAMPA funds. Compensatory afforestation funds. केते वर्ष रे 5 वर्ष रे एटा गोटे रिपोर्ट आसीची के देइची सेंट्रल एम्पावरमेंट कमिटी ये रिपोर्ट को प्रोवाइड करछथि. जुलाई 2025 रे रिपोर्ट टी आसीची जोडी को आ जाई जोडी रिवील हेची जे ओडिसा एतिकी परसेंटेज रो तार जो कैंपा कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी ए जो बॉडीटा रहिला एतिकी फंड्स 5 वर्ष भितर एतिकी परसेंट से यूज करि सरची बिटवीन 2019 टू 2024 रैंकिंग अमंग बेटर परफॉर्मिंग स्टेट. एबे ओडिसा गोटे बेटर परफॉर्मिंग स्टेट रे आसी जाईची. conceptual clarity हिसाब रे हमें फर्स्ट देखिबा गोटे कांसेप्ट कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन कोन बिकॉज़ कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन this term is in news. कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन होची धर गोटे हैबिटेट अछि गोटे धर गोटे जंगल अछि फॉरेस्ट अछि धर सेठी 10 टा ट्री थिले 10 टा गछ थिला सेठी आ एटी डिफोरेस्टेशन कैरी आउट हैला ठीक अछि. तो आ बदल रे जेतबे डिफोरेस्टेशन हे गला एरिया रो आ बदल रे सेतिकीटा जो प्लांटेशन एक्टिविटीज कैरी आउट हबो यूजुअली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट लैंड मध्ये एतरे इंक्लूड अछि to compensate for the ecological loss ताकू कहउछनी compensatory afforestation. जो डिफोरेस्टेशन ऑलरेडी हे जाई ताकू कंपेंसेट करिया पई जो afforestation माने गछ लगा जाउछ जो ताकू कहउ छै compensatory afforestation. आ एटा यूजुअली कोड हुए डिग्रेडेड फॉरेस्ट रे हुए बा नॉन फॉरेस्ट लैंड रे मध्ये एटा हे परिबो. आ ए न्यूज़ ता आसुची कहा अंडर रे एटा आसुची जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट अंडर रे बोथ प्रीलिम्स और मेंस पई इंपोर्टेंट. ठीक है देखिबा कैंपा एक्ट एटा केबे आस्तिला 2016 रे आस्तिला प्रोवाइड करे एटा कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन. एबे हमें देखिले जहा कि प्लांटिंग ट्रीज टू ऑफसेट फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. एठी हमें तार गोटे एग्जांपल देखिले ठीक अछि. देन सेकंड कहि छी द फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम यूजर एजेंसीज से माने अफोरेस्टेशन करांतु बस से माने जदी फंड्स दे देले कंपेंसेशन बाबद रे लाइक जो एजेंसीज रहले माइनिंग हेले इंडस्ट्रीज हेले जो माने भी डिफोरेस्टेशन करचंदी बा डाइवर्ट करचंदी फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लैंड टिकू से माने नेशनल कैंपा अथॉरिटी से जो फंड ता पैसाटा जहा कलेक्ट हबो सेटा नेशनल कैंपा अथॉरिटी अंडर रे मैनेज हबो आ स्टेट्स मानको दिया जिवो. एम कोन कैंपा रो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन फॉरेस्ट इकोसिस्टम रो प्रिजर्वेशन आ कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन. कैंपा रो जो फंड रहउची जो फंड मिलुची फॉर डाइवर्टिंग द लैंड फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस सेटा कहा अंडर रे कलेक्ट होची कलेक्टेड अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. एटा नेट प्रेजेंट वैल्यूज मध्ये इंक्लूड करूची कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन मध्ये इंक्लूड करूची ए फंड रे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन भी इंक्लूड हुए और कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट मध्ये इंक्लूड हुए. क्लियर. सेंट्रल और स्टेट लेवल रे बोथ लेवल रे एटा मैनेज होची. सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी गोटे कॉन्स्टिट्यूट कराची एटा होची गोटे स्टेट सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड एक्सपर्ट बॉडी गोटे और से मॉनिटर कोन करे टाइम टू टाइम फॉरेस्ट और एनवायरमेंटल गवर्नेंस को मॉनिटर करे इंक्लूडिंग कैंपा रा मध्ये फंक्शनिंग को से मॉनिटर करे. पॉजिटिव हाइलाइट कोन होची ओडिसा रे यूटिलाइजेशन देखिले न्यूज़ रे 80% से ऑलरेडी कैंपा फंड्स रे यूज करि सरची. नेशनल एवरेज 67 अराउंड रोची बट ओडिसा 87 आई मीन 88 अराउंड परसेंटेज से अप्रॉक्स यूज कर सरची. तो एटा रिलेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को शो करूची. इंडिया रो परफॉर्मेंस एटी एते फैक्चुअल इंफॉर्मेशन किछि दरकार नै बट स्टिल फॉर ओवरऑल नॉलेज हमें देखिबा एतिकी हेक्टेयर्स अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ दिस मच ऑलरेडी प्लांट हे सरलानी ट्री अराउंड अप्रॉक्स 85% से अचीव कर सरलानी. एतिकी टारगेट अछि 2 लाख समथिंग हेक्टेयर्स रो अराउंड 2 लाख ऑलरेडी हेक्टेयर्स 1 लाख से ऑलरेडी प्लांट हे सरलानी ट्रीज.
States like Madhya Pradesh, Karnataka, Gujarat, Arunachal, Manipur एमाने भी हाई परफॉर्मेंस शो कर किसी भल एग्जांपल्स देखो गुजरात रे 116% यूटिलाइजेशन कैरी फॉरवर्ड बैलेंसेस इति हे सारची एको आपण यूज करि परिबे एज एन एग्जांपल इन मेंस कंजर्वेशन ऊपर जदि किसी आसे क्वेश्चन एमपी एंड कर्नाटका कि गुजरात गोटे रोल मॉडल हिसाब रे हमें देखि परिबा रोल मॉडल मध्य प्रदेश कर्नाटका दे अचीव प्लांटेशन टारगेट्स फुली और नियरली जहाँ भी टारगेट थिला तार अराउंड से फुली से माने अचीव कर सारे आहुरी ए जिनसडा को हम केमिति स्ट्रेंथन करि परियो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड फर्स्ट सिंगल विंडो फंड डिस्बर्सल एटा कोन कहूची एटा कहूची कि जो फंड टा कैंपा पाइन जो फंड आसुची सेटा सिंप्लीफाई द फंड फ्लो बाय रिड्यूसिंग द लेयर्स बिटवीन नेशनल एंड स्टेट कैंपा dedicated CAMPA units in the states मानकर dedicated CAMPA units establish हवा दरकार for project execution audit और reporting पाई technology in monitoring जहाँ fund use होची बा conservation program जहाँ भी afforestation programs carry out होची तारा monitoring बेले technology रो use हवा दरकार to increase the efficiency of the monitoring and the planning GIS drone satellite mapping ऐसे भी use हवा दरकार community जो लोक माने रहिले से माने को involve करवा दरकार ठीक अछि incentivize joint forest management committees and local tribal groups fifth outcome based reporting हवा दरकार जहां फंड रिलीज होची ताको प्लांटेशन सक्सेस मैट्रिक्स संगे लिंक कर देले सेटा गोटे आउटकम बेस्ड रिपोर्टिंग को प्रमोट करबो strengthen accountability introduce performance linked audits and social audits for transparency फंड केते रिलीज हला कोटी खर्च हला से जिनसर मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग ए सब हेले परफॉर्मेंस लिंक्ड ऑडिट्स कंडक्ट हेले अकाउंटेबिलिटी आउ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी आर प्राइमरी पर्पस कोन फर्स्ट टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट एरियाज सेकंड टू मैनेज फंड्स for afforestation to compensate for forest land diverted to non forest use second statement dela eta और थर्ड स्टेटमेंट कोन कहिछि फाइनेंशियल एड ट्राइबल कम्युनिटी मान को प्रोवाइड करिया पई डी कोन कहिछि टू रेगुलेट टिम्बर ट्रेड इन इंडिया आ भितर आंसर कोन हबो आंसर्स विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास जो माने एटी आंसर दबाउ चाहउछनी चार्ट सेक्शन रे आंसर दे पारो दियौ नेक्स्ट एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक आई एम सेइंग टॉपिक टी होची अंकुरा हॉस्पिटल डिटेक्ट्स रेयर fetal disorder Edwards syndrome this Edwards syndrome science and tech under a fall करूची for relevant for prelims under GS3 एटा Edwards syndrome is very important topic in today's session भुवनेश्वर रे गोटे हॉस्पिटल अछि अंकुरा हॉस्पिटल जे डिटेक्ट करे जे कोन गोटे रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर नेम एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 18 जोडे कि 16 वीक ओल्ड फिटस रे देखा जायछि आ केमिति से माने डिटेक्ट कले बाय यूजिंग एडवांस्ड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक्स एटा गोटे रेयर डिटेक्शन हिसाब रे से माने नोचति जोडा कि एम्फसाइज करूछि अर्ली स्क्रीनिंग प्रीनेटल काउंसलिंग आ जेनेटिक डायग्नोसिस रो मैटरनल हेल्थ केयर रे इंपोर्टेंस एठी देखि परथिबे एठी गोटे मु पिक्चर अटैच करछि क्रोमोसोम्स एठी देखिबे 18th नंबर क्रोमोसोम रे एठी तीनटा अछि ट्राइसोमी इन 18th नंबर क्रोमोसोम बाकी दुईटा अछि एठी तीनटा अछि सो 18th नंबर क्रोमोसोम रे एटा डिसऑर्डर ता देखा जाउछि बैकग्राउंड देखिबा गोटे 25 ईयर ओल्ड फर्स्ट टाइम मदर जे कि जेतबे आसिले ताकर अल्ट्रासाउंड स्कैन पाइए डॉक्टर ए एनोमलीज को से आइडेंटिफाई कले जेमति कि माइक्रोमैथिया स्मॉल जॉ अछि क्लब फुट वन साइड क्लेंच्ड फिस्ट्स लो सेट ईयर्स AVSD atrioventricular septal defect heart abnormality ए सबु as characteristic नोट करि परिबे ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम मने रखि देबे ए कैरेक्टरिस्टिक गुला डॉक्टर जोटा कि आइडेंटिफाई करे यू डोंट नीड टू गेट इनटू मच टेक्निकलिटीज ठीक अछि बस
एटा माने मने रखिबे कि एई गुडा होची कैरेक्टरिस्टिक जोडा कि डॉक्टर आइडेंटिफाई कले ए मदर जेतबेले आसीथिले ताकर अल्ट्रासाउंड स्कैन पाई तो सेटा गोटे सस्पिशन क्रिएट कला कि क्रोमोसोमल एनोमली रहिची एमनियोसेंटेसिस जेतबेले कंडक्ट करा गला जोटा कि होची डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट ताकू कुआ जाय एमनियोसेंटेसिस तो कंफर्म हिला कि ट्राइसोमी अछि क्रोमोसोम नंबर 18 रे pregnancy was medically terminated after informed consent and counseling एबे देखिबा हमें एडवर्ड सिंड्रोम को जोटा कि हम एग्जाम पर्सपेक्टिव रे इंपोर्टेंट जोटा कि न्यूज़ रे अछि ट्राइसोमी 18 भी ताको कहउछथि जोटा कि प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 18 एटी मु फोटो रे देखैथिली एटी सबुडी दुई दुईटी अछि एटी तीनटी अछि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अछि सेकेंड मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल ट्राइसोमी आफ्टर डाउन सिंड्रोम पर एटा गोटे सेकेंड मोस्ट ऑटोसोमल ट्राइसोमी हिसाब रे एटा निया जाउची 5000 लाइव बर्थ्स भितरे अराउंड जनक रे एटा देखा जाउची फीचर रे जी मेंटल रिटार्डेशन कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स रहिबो छुआ रे मालफॉर्म्ड ऑर्गन्स रहिबो ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन मध्ये रहिबो प्रोग्नोसिस कोन हाई रेट ऑफ इंट्रायूटेरिन डिवाइस greater than 90% infants die within the first year रे ही more than 90% छुआ समानकर डेथ हो जाए एमनियोसेंटेसिस कोन जोटा कि टेस्ट है कि एटा कंफर्म हैला फर्स्ट अ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट done between 15 to 20 weeks of pregnancy मने रखिबे amniotic fluid रे एटा होची टेस्ट जहां को कुआ जाउची amniocentesis 15 to 20 weeks of pregnancy रे एटा टेस्ट होची involves extracting a small amount of amniotic fluid for chromosomal analysis chromosomes normal अछि कि नाही बेबी रो ताको डिटेक्ट करिया पई small amount of amniotic fluid extract करा जाउची then test conduct करा जाउची within 15 to 20 weeks of pregnancy significance कोन obviously जेतबेले early detection होबो previous slides रे कहली more than 90% babies से माने फर्स्ट ईयर रे ही तांकर डेथ हे जाउची जेतबेले अर्ली डिटेक्शन हबो सेतबेले लाइफ सेव हे पारिबो पेरेंट्स मान को भी हेल्प हबो टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन आउ एटा साइकोलॉजिकल पछरे छुआर जहा भी डिसऑर्डर्स हबो ओ सेतिरे जहा भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा आसीबो सेटा को रिड्यूस करि हबो improves the maternal health care by integrating fetal medicine into antenatal care maternal health care improve habo genetic literacy promote habo through these tests तो जेनेटिक लिटरेसी प्रमोट हेले समस्त पेरेंट्स भी जानिबे ताकर अवेयरनेस बढ़िबो से माने इन्फॉर्म डिसीजन नै परिबे अवेयरनेस कहा ऊपर बढ़िबो जो कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स रोजी जेमि एडवर्ड सिंड्रोम हे गला डाउन सिंड्रोम हे गला मेडिकल एथिक्स एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट हाइलाइट्स द पेशेंट ऑटोनॉमी एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स जदि एमती किछि बेबी रो किछि जदि फीटस रो सेमती किछि क्रोमोसोमल प्रॉब्लम अछि तो पेरेंट्स माने इन्फॉर्म कंसेंट से माने देई परिबे वेदर टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी और टू कीप इट तो सेटा ताकर रिप्रोडक्टिव राइट्स एनफोर्स करूची एंड इट आल्सो स्ट्रेंथन्स द मेडिकल एथिक्स एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट्स एंड द पेशेंट ऑटोनॉमी अकॉर्डिंग रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव राइट्स फर्स्ट सच केस इन 5 वर्ष मध्यरे एटा फर्स्ट केस देखा जाईची एट अंकुरा सजेस्ट इम्प्रूव डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज इन रीजनल हॉस्पिटल एटा गोटे रीजनल हॉस्पिटल हेले मध्य डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज तांकर एते स्ट्रांग कि सेटा गोटे से माने गोटे रेयर क्रोमोसोमल गोटे डिफेक्ट को से माने आइडेंटिफाई करि परले आउ टाइमली डिसीजन नै परले बोथ पेरेंट्स एंड डॉक्टर्स सो इट शोज द इम्प्रूव डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज इन रीजनल हॉस्पिटल्स एज वेल Edwards syndrome is caused by the presence of an extra copy of which chromosome? In chapter option is chromosome X, 21, 18, 13. What will be the right answer? It's a very direct question. Everyone can answer. Odisha to introduce tigers in Debrigad Wildlife Sanctuary. Debrigad Wildlife Sanctuary रे Odisha tigers किछिटा से introduce करिवो. GS पेपर 3 एनवायरनमेंट अंडर है स्पीसीज रिलेटेड करंट अफेयर्स होची तो GS पेपर 3 एनवायरनमेंट अंडर है एटा इंपोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव टाइगर रिजर्व कोन
एटा गोटे प्रोटेक्टेड एरिया कहा अंडर एटा फॉर्म हेतला प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम अंडर 1973 अंडर फॉर्म हेतला आ एटा कंसिस्ट करछि गोटे कोर जोन रहउछि आ गोटे बफर जोन आ जो कोर जोन रहउछि एटी ह्यूमन एक्टिविटी किछि भी कंडक्ट हेई परिबो हैला तो एटी ह्यूमन एक्टिविटीज किछि भी हेले एटा होछि इलीगल आ गोटे बफर जोन रहउछि सेटी रेगुलेटेड एक्टिविटी हेई परिबो आफ्टर मॉनिटरिंग जोटा कि कोर जोन रे जो माने एनिमल्स अछंती तांकू सी जदी अफेक्ट करू नथिबो नेगेटिवली ताहाले कंडक्ट हेई परिबो managed under Wildlife Protection Act 1972 and governed by the NTCA. News रे कोन पई अछि ओडिशा गवर्नमेंट अनाउंस करिछि plans to introduce tigers in Debrigad Wildlife Sanctuary जोटा बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे अछि एटा गोटे मेजर स्टेप इन रिवाइविंग द बिग कैट population in the state आउ एटा कहा पर ये डिसीजन टा निया जायछि टेक्निकल अप्रूवल जेतबे मिली गला एनटीसीए पाखरु ता पर ये डिसीजन टा निया जायछि to convert Debrigad into a tiger reserve. Background कौन Debrigad Wildlife Sanctuary टा कोठी located एटा Western Odisha रे located बरगढ़ district रे near Hirakud Reservoir 347 kilometers एटा cover करूची square kilometers rich in faunal diversity especially herbivores and birds making it ideal prey base for tigers एठी herbivores बहुत अछंती birds अछंती तो एठी तार जो prey base अछि जो शिकार माने tigers मानकर जहा ऊपर से माने शिकार करंती ताकर फूड बेस एठी सेटा abundant अछि तो it is rich in faunal diversity Odisha currently has only one functional tiger reserve जोटा कि Simlipal after taking the permission after taking the approval of NTCA ए डिसीजन टा निया जायछि एबे NTCA कोन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी आ एटा गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी इट इज अ परमानेंट बॉडी आ एटा को मिनिस्ट्री अंडर आसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री आसी गला अगेन मने रखिबे ए बॉडीटा ए अथॉरिटीटा ए मिनिस्ट्री अंडर रे आसे आ आर मैंडेट कोन इट मैंडेटेड टू अप्रूव टाइगर रिजर्व प्रपोजल ओवरसी टाइगर ट्रांसलोकेशन एंड हैबिटेट प्रोटेक्शन टाइगर मानक जो ट्रांसलोकेशन गोटे जगह आ गोटे जगह हैबिटेट प्रोटेक्शन ताकर आको ओवरसी करबा आ कंप्लायंस विथ द इकोलॉजिकल नॉर्म जहां भी इकोलॉजिकल नॉर्म रहिछि स्टैंडर्ड्स रहिछि ता सहित कंप्लाई करबा टाइगर रिलोकेशन व्हाट इज टाइगर रिलोकेशन होछि मूविंग टाइगर्स टाइगर मान को गोटे एरिया रो आ गोटे एरिया को नबा सेटा को जे टाइगर रिलोकेशन हिस्टोरिकल हैबिटेट रे तांको री इंट्रोड्यूस आउथरे करबा कि गोटे हैबिटेट रे जदी बहुत बड़े टाइगर हे जाइछथि कंजेस्ट एरिया लानी एरियाटा इन टाइगर पॉपुलेशन and it becoming very densely populated with tigers तो ताको डीकंजेस्ट करिया पई टाइगर रिलोकेशन ता कैरी आउट हुए बूस्टिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड पॉपुलेशन स्प्रेड एडवांटेज कोन टाइगर रिलोकेशन रो एटा रिड्यूस करे प्रेशर कहा ऊपर जोटा कि गोटिए मात्र अछि टाइगर रिजर्व सिमलीपाल ता ऊपर प्रेशर रिड्यूस करिवो एंड इट विल आल्सो डिक्रीज द कंजेशन it will distribute tiger population more evenly across the state utilizes underused habitat जो habitat जमति कि देब्रीगढ़ हे गला एठी बहुत प्रे बेस थिले मध्य टाइगर्स हां तो एटा अंडर यूज्ड तो आकू यूटिलाइज करी हबो and it has ideal topography good prey base and herbivore density ecotourism को boost करिवो wildlife tourism potential add करिवो in western odisha for example देब्रीगढ़ जेतबेले सेठी टाइगर रो पॉपुलेशन इंक्रीज हबो तो टूरिस्ट आसीबे टू सी द टाइगर्स टूरिस्ट विल आल्सो इंक्रीज प्रमोट कंजर्वेशन एथिक जेतबेले गोटे फ्लैगशिप स्पीसीज को रिवाइव करा जो पई की स्टेप्स निया जाए इन अ रीजन विथ नो टाइगर पॉपुलेशन तो इट प्रमोट्स द कंजर्वेशन एथिक बायोडायवर्सिटी मल्टीप्लायर प्रोटेक्टिंग टाइगर हैबिटेट आल्सो प्रोटेक्ट द एंटायर इकोसिस्टम देन एबे हम पढिबा आकांक्षा हार्ट अभियान आ ए टॉपिक ता कहा अंडर रे आसु एटा आसु जीएस पेपर 2 सोशल सेक्टर इनिशिएटिव अंडर रे relevant for prelims and mains न्यूज रे कोन पई अछि हमर जो चीफ मिनिस्टर रहिले से लॉन्च करिसेंती आकांक्षा हार्ट अभियान एटा गोटे वीक धरि के एटा चालिबो एटा गोटे कैंपेन ए कैंपेन ता गोटे वीक पई चालिबो टू मार्केट लोकल प्रोडक्ट्स अंडर द आकांक्षा ब्रांड जहां भी लोकल प्रोडक्ट्स रोची लोकली जो जिंस गुडा बना होची ताको मार्केट करबा पई कि आ से लोकली मेड प्रोडक्ट्स का को ब्रांड अंडर रे मार्केट को छडा दिबो आकांक्षा ब्रांड आ एटा केबे अनाउंस हेतला संपूर्णता अभियान अवार्ड सेरेमनी बेले एटा अनाउंस हेतला जोटा कि स्टेट कन्वेंशन सेंटर रे हेतला फोकस कोन आरो
इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करवा आउ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो रहिले फार्मर्स रहिले आर्टिसंस वीवर्स एमानन को मार्केट एक्सेस आउ तांकर लोकल प्रोडक्ट को मार्केट एक्सेस अंडर आकांक्षा ठीक अछि बैकग्राउंड कोन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम टिके देखि दबा नीति आयोग द्वारा लॉन्च हेतला 2018 रे कोथि पई कि अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट जो माने रहिले 49 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बेस्ड ऑन द 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हिसाब रे जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट रहिले से मानकर अपलिफ्टमेंट आउ डेवलपमेंट पई कि लॉन्च हेतला फोकस एरियाज कोन एरिया रे health and nutrition, education, agriculture and water resources, financial inclusion, skill development and infrastructure. Odisha's extension. Expand ADP, aspirational district program to block level through aspirational block program. aspirational district program को block level को निया जाई सारिची एटा को expand करि दिया जाई जोटा कि district level रे होतला एबे सेटा block level रे मध्ये हबो through aspirational block program under the aspirational district program. तो एथिरे कोन हबो granular ग्रास रूट्स ए सब टर्म प्रीवियस सेक्शन रे बुझेइतली ग्रैन्युलर गवर्नेंस कोन जने पचारि बिथिले मते कमेंट सेक्शन रे मु कहितली एंड फास्टर कन्वर्जेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स मध्ये प्रमोट हबो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पई कि किछटा हमें एडी टर्म देखिबा जेंदी गोटे आकांक्षा हार्ट अभियान एटा कोन एटा गोटे स्टेट लेवल इनिशिएटिव कोथि पई लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करिया पई डिजिटल आउ फिजिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जिवो टू सेल रूरल प्रोडक्ट्स केवल फिजिकल प्लेटफॉर्म द्वारा नहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करा जिवो टू लिस्ट एंड सेल द रूरल प्रोडक्ट्स जहाँ भी लोकल प्रोडक्ट्स बनुची सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लिंक करा जिवो आ आर्टिसन मान को लिंक करा जिवो टू ई कॉमर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड रिटेल मानक सह टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एनहांस ब्रांड विजिबिलिटी थ्रू आकांक्षा ब्रांड जहाँ भी प्रोडक्ट्स मार्केट को छड़ा जिवो सेगुडा आकांक्षा ब्रांड अंडर रे छड़ा जिवो संपूर्णता अभियान कोन एटा न्यूज रे मेंशन हेची संपूर्णता अभियान कोन हम बैकग्राउंड रे देखले बे जानि पाई अभियान ता पर्टिकुलरली कोन एटा गोटे परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव एटा गोटे इंसेंटिव जोटा कि परफॉर्मेंस हिसाब रे मोडे इंसेंटिव मॉडल फॉर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स माने मेजर्स improvements through monthly reviews and SDG linked indicators. improve हैला कि नहीं जो aspirational जो blocks रहले जो अंडर डेवलप्ड जो ब्लॉक्स रहले से मानकर इंप्रूवमेंट हैला कि नहीं से मंथली रिव्यूज कैरी आउट करबो ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिंक्ड इंडिकेटर्स वोकल फॉर लोकल मूवमेंट कोन एथि जेतबळे गोटे लोकल प्रोडक्ट को मार्केट करा जिबार कथा आसुची तो वोकल फॉर लोकल मूवमेंट विषय में टिके देखिबा एटा इंस्पायर हेतिला इंस्पायर्ड बाय आत्मनिर्भर भारत अभियान आ एटा एनकरेज करे को माने जो इंडिजिनियस प्रोडक्शन रहिला जो इंडिजिनियस लोक माने जहा को प्रोड्यूस करूचंती एटा को प्रमोट करूची एनकरेज करूची आ लोकल जॉब क्रिएशन मध्ये एनकरेज करूची तो वे फॉरवर्ड कोन फर्दर आकु हमें केमिति ए जिंसटा को हमें स्ट्रेंथन करि परिबा थ्रू डिजिटल स्किल ट्रेनिंग कहना प्रोडक्ट मार्केट ओनली थ्रू फिजिकल मीन्स तो हमारे डिजिटल मीन्स भी हम जदि से माने डिजिटली स्किल्ड नथिबे ताहले ए प्लेटफॉर्म से माने यूज करि परिबेनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज करि परिबेनी तो एसएचजी मान को पैकेजिंग ब्रांडिंग ऑनलाइन लिस्टिंग रे कैपेसिटी बिल्डिंग नेसेसरी लॉजिस्टिक पार्टनरशिप भी नेसेसरी जने इंडिया पोस्ट हला ओएनडीसी हला प्राइवेट लॉजिस्टिक फॉर लास्ट माइल डिलीवरी पई की लॉजिस्टिक पार्टनरशिप मध्य नेसेसरी तो ए इंडियन पोस्ट ओएनडीसी एमानक सहित टाई अप्स कले बेटर लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी हबो एंड लास्ट माइल डिलीवरी मध्य स्ट्रेंथन हबो क्वालिटी सर्टिफिकेशन यूनिट्स local certification hubs to ensure product authenticity and standards local certification hubs थिबा दरकार कोथ में कि प्रोडक्ट ऑथेंटिक अछि कि नाही कि रियल कि नुहे कि डुप्लीकेट तो नुहे आ तार स्टैंडर्ड्स मेंटेन करिया पई क्वालिटी सर्टिफिकेशन यूनिट्स थिबा दरकार ताहाले कंज्यूमर मानकर ट्रस्ट बिल्ड होबो ए सब प्रोडक्ट को नै कि टारगेटेड मार्केटिंग होबा दरकार कैंपेन्स रन होबा दरकार कहा ऊपर फोकस करके जो अर्बन कंज्यूमर्स रहले एनआरआईज रहले गिफ्ट मार्केट्स जो रहला परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव रिवॉर्ड बेस्ट परफॉर्मिंग ब्लॉक्स एंड प्रोड्यूसर्स विद विजिबिलिटी एंड स्किल जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग जो ब्लॉक्स
रहिबे जो प्रोड्यूसर्स रहिबे जो माने लोकली प्रोड्यूस करिथिबे से मानकु रिवार्ड दिया जिवो रिवार्ड बेस्ट परफॉर्मिंग ब्लॉग्स एंड प्रोड्यूसर्स विथ विजिबिलिटी एंड स्किल recognition and award मिली आ अंडर इन recognition of exceptional progress gold medal कहा को मिली awarded to मालकानगिरी एंड नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट सिल्वर मेडल कहा को मिली कंधमाल एंड कोरापुट जेतबेले कि ढेंकानाल गजपति कलाहांडी और नुआपड़ा एमाने ब्रोंज मेडल पाइ छ ठीक अछि क्लियर देन पोटैटो फार्मिंग हिट इन कोरापुट एटा आसुची जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर अंडर रे प्रीलिम्स एंड मेंस पाइ की इंपोर्टेंट न्यूज रे कोन पाइ अछि पोटैटो फार्मिंग जो रहिची कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे सेटा 2 मंथ जो रेनफॉल हैला सेठी तो पोटैटो फार्मिंग से affect ହେଇଛି negatively. Farmers expressed discontent with revised procurement and rebate scheme and faced technical barrier in land registration. Land को ସେମାନେ register କରି पारनांती due to technical barrier और जो नुआ revised procurement और rebate scheme आसीଛି ସେଥିରେ farmers माने खुशी नाहांती. तो ओडिशा गवर्नमेंट एम करिछि to make the staff self sufficient in potato production with a target of 5000 hectares एतिकी टारगेट रहिछि under cultivation in Koraput only. बैकग्राउंड कोन ओडिशा पोटैटो मिशन जोटा अछि सेटा लॉन्च हेतला कोथि पे टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट एंड एंश्योर लोकल फूड सिक्योरिटी. ओडिशा पोटैटो मिशन अंडर रे जहां भी प्रोड्यूस हबो तो सेटा ए मिशन ता लॉन्च कोन पे हेतिला जेतबेले प्रोडक्शन बढ़िबो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कमिबो कम इंपोर्ट करियो पड़िबो कायना एबे लोक माने सेल्फ सफिशिएंट होचंदी तांको पाकरे अछि खाइबा को से माने इंपोर्ट करिवेनी इंपोर्ट नेसेसिटी कमी जिवो एंड एंश्योर लोकल फूड सिक्योरिटी. प्रोग्राम प्रोवाइड्स सब्सिडाइज सीड्स दोथिला टेक्निकल सपोर्ट दोथिला ई प्रोग्राम अंडर रे आउ रिबेट स्कीम्स फार्मर मानको प्रोवाइड करा जाय छै. टारगेट फॉर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट इन 24-25 टारगेट दिया जेतला कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे टारगेट ला कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जो 24-25 रे 5000 हेक्टेयर्स रे पोटैटो कल्टीवेशन ओवर 5000 हेक्टेयर्स. फर्स्ट हमें देखो पोटैटो मिशन हो गोटे स्टेट इनिशिएटिव. इट इज नॉट अ सेंट्रल इनिशिएटिव एटा हो गोटे स्टेट इनिशिएटिव जहां एम कोन इट इज एम्ड एट इंक्रीजिंग लोकल प्रोडक्शन एंड रिड्यूस एक्सटर्नल डिपेंडेंस इंपोर्ट रिडक्शन पाई कि एटा इंपोर्टेंट आर एम थिला कि लोकल प्रोडक्शन इंक्रीज करी कि इंपोर्ट ऊपरे कम निर्भर है कि एक्सटर्नल डिपेंडेंस कम करी लोकल प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाटा. Incorporate subsidized imports, area-based targets and direct benefit transfer. ए मिशन अंडर रे ए सब भी इनकॉर्पोरेट होची. फार्मर मान को 470 पर बस्ता पर सैक ऑफ पोटैटो मिलुथिला आगुरु रिसीव 730 एज रिबेट एबे 730 मिलची. नाउ पे 1000 पर सैक एबे 1000 पर सैक मिलची विथ अ रिबेट ओनली 500 जेतबे 470 पर सैक ला सेतबे रिबेट 730 थिला जेतबे एबे 1000 सैक पर सैक मिलुची पैसा एंड रिबेट मध्ये कमिची 500 क्रेडिटेड पोस्ट हार्वेस्ट पर सेटा क्रेडिट होची. कोरापुट रे चैलेंजेस कोन फर्स्ट होची तार टोपोग्राफी सेटा गोटे हिली टेरेन तो एटा कॉम्प्लिकेट करची फार्मिंग को लॉजिस्टिक को. देन वेदर गोटे चैलेंज रोची जोटी कि हेवी रेनफॉल होची. कनेक्टिविटी गोटे चैलेंज रोची जेंती कि इंटरनेट रो सिग्नल बा मोबाइल रो इंटरनेट सेठी वीक तो ऑनलाइन लैंड रजिस्ट्रेशन हे पारुनी फार्मर्स मानकर. फार्मर्स आर रियली अनहैप्पी अबाउट दिस. So shift to offline registration became necessary in many areas. जेतबे ऑनलाइन लैंड रजिस्ट्रेशन हे पारु से माने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को जाउछनी. एडवांटेजेस कोन पोटैटो मिशन रो हम देखिबा. फर्स्ट इट रिड्यूसेस द डिपेंडेंसी मु कहली इंपोर्ट डिपेंडेंसी से रिड्यूस करची. प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन ट्राइबल एंड द हिली रीजन. एंश्योर्स एम्प्लॉयमेंट जेतबे कल्टीवेशन बढ़िबो सेतबे एम्प्लॉयमेंट बढ़िबो इनकम बढ़िबो ट्राइबल फार्मर्स मानकर. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मध्ये इनकॉर्पोरेट हेची पोटैटो मिशन रे प्रीवियस स्लाइड रे हमें देखिले. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एटा कोन प्रमोट करे एटा ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करे. एनकरेजेस लोकलाइज्ड सीड प्रोडक्शन एंड स्टोरेज मेकानिजम्स. जोटी प्रोडक्शन होची सेठी लोकलाइज्ड सीड प्रोडक्शन आ स्टोरेज मेकानिजम मध्य सेठी एनकरेज हबो पोटैटो मिशन अंडर रे. स्टोरेज मेकानिजम फॉर एग्जांपल कोल्ड स्टोरेज
कोल्ड स्टोरेज हे गला वेयर हाउसेस हे गला डिसएडवांटेजेस एंड चैलेंजेस कोन रहउछ हेवी रेनफॉल कोरापुट रे जो हेवी रेनफॉल हैला एबे पोटैटो फार्मिंग सेठी हिट हेची सेठी अफेक्ट हेची नेगेटिवली सो इट डिसरप्टिंग सोइंग एंड द फील्ड वर्क हेवी रेनफॉल एरा अफेक्ट करूची फाइनेंशियल बर्डन ड्यू टू इंक्रीज इन अपफ्रंट सीड कॉस्ट सीड रो कॉस्ट इंक्रीज होची तो सेटा गोटे फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करूची फार्मर्स मानक ऊपर रिबेट मिलवा को डेरी होची बाय डीबीटी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेठी पुअर आ जोटा कि ऑनलाइन लैंड रजिस्ट्रेशन को अफेक्ट करूची तो से माने फार्मर्स माने कोडी के मूव करछनी ऑफलाइन को मूव करछनी रियल टाइम मॉनिटरिंग सेठी हेई पारुनी तो सेटा सेठी गोटे प्रोग्रेस हैम्पर करूची मिसट्रस्ट अमंग फार्मर्स ड्यू टू रिवाइज्ड प्राइसिंग पॉलिसी जेतबेले रिवाइज हे गला सेटा फार्मर्स मानक मध्य रे गोटे ट्रस्ट इशू क्रिएट करछ आर वे फॉरवर्ड कोन हबा दरकार ए प्रॉब्लम रो वेदर बेस्ड एडवाइजरी सिस्टम एठी प्रोवाइड हबा दरकार जो हिल रे जो फार्मर्स माने रहउचंदी सो दैट कल्टीवेशन एते भी एडवर्सली हिट हबनी आफ्टर टोरेंशियल रेन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करा जिबा दरकार फॉर एग्जांपल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हेले कोन हबो लैंड रजिस्ट्रेशन बढ़िबा और सेटा भी ऑनलाइन प्राइसिंग और रिबेट स्ट्रक्चर को रिकंसीडर करबा दरकार सिंप्लीफाई करबा दरकार टू फेवर द मार्जिनल फार्मर्स जो छोटो फार्मर्स माने रहिले ऑन साइट सीड स्टोरेज प्रमोट करबा दरकार डिस्ट्रीब्यूशन हब्स क्रिएट करबा दरकार जो ब्लॉक्स पूरा अंडर डेवलप्ड बा रिमोट एरियाज रे अछंती एग्री एक्सटेंशन स्टाफ माने को डिप्लॉय करा जिबा दरकार ब्लॉक वाइज जो माने असिस्टेंस प्रोवाइड करबे को माने को फार्मर्स माने को जब ताकर किछि प्रॉब्लम हुए बा किछि क्वेरी थाए से माने कहा पचारि परिबे एग्री एक्सटेंशन स्टाफ माने को पचारि परिबे क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज हवा दरकार कोठी रेन अफेक्टेड जोन्स रे तो एठी में वर्षा हैला आ कल्टीवेशन बा जा भी प्रोड्यूस हेछि सेटा पुअरली हिट हैला तो सेतरे से माने को इंश्योरेंस मिलबा दरकार जो माने अफेक्टेड फार्मर्स माने क्वेश्चन नंबर 5 एडी मिशन पोटैटो ऊपर अछि जेटा कि लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइमरीली एम्स टू एडी गोटे करेक्शन करिवे एडा गोटे इट इज अ स्टेट इनिशिएटिव ठीक अछि तो एडार कोन हबो इतरे स्टेटमेंट नंबर ए इंक्रीज पोटैटो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स बा बी प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड पोटैटो प्रोडक्ट्स सी सब्सिडीज दिया जिवो पोटैटो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर माने को केवल से माने को सब्सिडीज दिया जिवो आ क्वेश्चन नंबर डी कोन स्टेटमेंट नंबर डी कोन कहि छी ट्रेडिशनल पोटैटो वेराइटीज माने को से रिप्लेस करबे जेनेटिकली मॉडिफाइड माने को यूज करा जिवो फॉर कल्टीवेशन कोन हबा आंसर गिव मी द आंसर देन हमें देखिबा डीआरडीओ ऊपर गोटे न्यूज अछि जोटा कि आसुजी जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक अंडर रे रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स से सक्सेसफुली टेस्ट फायर करछि कहा को प्रलय को जे गोटे टैक्टिकल मिसाइल न्यूज रे कोन अछि डीआरडीओ कंडक्ट करछि टू बैक फ्लाइट टेस्ट दीटा बैक टू बैक फ्लाइट टेस्ट हेछि कहारो प्रलय जे कि गोटे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मंडे और ट्यूसडे एटा कंडक्ट हेतिला कोठी अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ बालेश्वर कोस्ट ओडिशा ए टेस्ट टा वैलिडेट करूची कोन मिनिमम और मैक्सिमम रेंज मिसाइल लो मिनिमम मैक्सिमम रेंज केते रहउची एटा गोटे मेजर माइलस्टोन इन टुवर्ड्स द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फीचर्स कोन प्रलय मिसाइल जतबेले एठी मेंशन हे सरची हम एतर फीचर्स देखतेबा आर टाइप कोन एटा होची गोटे शॉर्ट रेंज जदी क्वेश्चन लॉन्ग रेंज थिबा ताल सेटा भूल हो माने रखबे शॉर्ट रेंज एटा सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल एटा देन propulsion तार कोन सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर एटा होस तार propulsion और रेंज आर कोन रहउची 350 रो 500 किलोमीटर रेंज रहउची वॉरहेड कैपेसिटी केते वॉरहेड से कैरी करि परिबो 500 केजीस रो 1000 केजी से कैरी करि परिबो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस कोन प्रलय रो एटा इंडिया रो जो टैक्टिकल स्ट्राइक कैपेबिलिटी रहिला ताकू बढ़ाउची ताकू स्ट्रेंथन करूची मिसाइल सिस्टम जहाँ भी एक्जिस्टिंग मिसाइल सिस्टम अच्छा इंडिया पाखे जैसे ब्रह्मोस होगला अग्नि सीरीज होगला ताकू कॉम्प्लीमेंट करिवो देन क्विक डिप्लॉयमेंट एंड हाई मोबिलिटी
एटा डेवलप हेची क्विक डिप्लॉयमेंट और हाई मोबिलिटी पाई कि जोटा कि बॉर्डर ऑपरेशन रे स्पेसिफिकली सुटेबल एनिमी टारगेट को न्यूट्रलाइज करि परिबो जेमति कि कमांड पोस्ट हे गला एनिमी कमांड पोस्ट एनिमी लॉजिस्टिक हब बा एनिमी एयर बेसिस एटा गोटे डिटरेंस टूल हिसाब रे यूज करा जाय परिबो इन लिमिटेड वॉर सिनेरियोस क्लियर एबे हमें देखिबा ओडिशा लॉन्चेस ऑसम ऐप एंड आसो जिबा अंगनवाड़ी कैंपेन एटा आसुची जीएस पेपर टू गवर्नेंस और वेलफेयर स्कीम्स बोथ रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एनी इवेंट रे हेइतला कोन इवेंट रो गोटे ओवरव्यू जदी देखिबा ओकेजन थिला स्टेट लेवल कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप फॉर सीडीपीओस चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स लॉन्च कहा द्वारा इतला डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जे आ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जे अछंती पार्वती परिडा ताका द्वारा लॉन्च हेतिला केबे 31 जुलाई 2025 रे वेन्यू थिला भुवनेश्वर की इनिशिएटिव एठी कोन कोन लॉन्च हेतिला फर्स्ट हेतिला ऑसम ऐप फुल फॉर्म होचे अंगनवाड़ी वेलफेयर एंड सर्विस ओवरसाइट मॉनिटरिंग एवरीवेयर मने रखिबे फुल फॉर्म टा देन पर्पस कोन थिला ए ऐप लॉन्च करिवार ये कोन करबो अंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जति रही छै सर्विस डिलीवरी जहा रही छै ताको रियल टाइम मॉनिटर करिवो कि ए सब जिंस अंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बा सर्विस डिलीवरी ता एफिशिएंटली कैरी आउट होउछि कि नाही तो एटा जते बेले रियल टाइम मॉनिटरिंग पॉसिबल हो तो सेटा इंक्रीज कोन करबो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करबो अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करबो पॉलिसी मेकर्स मानकर रेस्पोंसिवनेस इंक्रीज करबो को मानकर ऑफ आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेस आसो जीवा अंगनवाड़ी कैंपेन एठी लॉन्च हेतला आ ए कैंपेन टा ड्यूरेशन कोन अगस्त 1 टू अगस्त 15 ए कैंपेन रो ड्यूरेशन आवर ऑब्जेक्टिव कोन पे कैंपेन टा लॉन्च हेची पब्लिक विजिट टू अंगनवाड़ी सेंटर को एनकरेज करिया पई ए कैंपेन लॉन्च हेची अंगनवाड़ी सेंटर मानको पब्लिक माने विजिट करि परिबे क्लीनलीनेस इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस क्वालिटी को इंप्रूव करिया पई लॉन्च हेची रिव्यू करिया पई लॉन्च हेची फीडबैक नवा पई की लॉन्च हेची एटा कोइंसाइड कहा संगे करछ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक अगस्त 1 टू 7 जो एबे वीक ता चलिबो सेटा होछ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ता संगे एटा कोइंसाइड करछ फोकस कोन आरो कम्युनिटी ओनरशिप इन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट को प्रमोट करबो देन असला हमर नेक्स्ट न्यूज़ कोरापुट सोलर फार्मिंग बूस्ट विथ एग्री फोटोवोल्टाइक्स एटा कहा अंडर रे आसुची को जीएस पेपर अंडर जीएस पेपर 3 इकोनॉमी एग्रीकल्चर रा भी एटा रेलेवेंस अछि एटा साइंस एंड टेक रे भी ए न्यूज़ रा रेलेवेंस रही छै प्रीलिम्स और मेंस दीटा पई दरकार न्यूज़ रे कोन अछि ओडिसा कोन होस्ट करछि तारा फर्स्ट एवर स्टेट लेवल समिट होस्ट करछि एग्री फोटोवोल्टाइक्स ऊपर जोटा कि होछि सन क्रांति एपीवी 2025 को भुवनेश्वर रे लॉन्च ऑफ ओडिसा's फर्स्ट कम्युनिटी लेड एपीवी पायलट इन कोरापुट एम्ड एट एम्पावरिंग ट्राइबल स्मॉल होल्डर फार्म्स ओडिसा रो फर्स्ट कम्युनिटी लेड एपीवी पायलट कोडी लॉन्च हेची कोरापुट रे लॉन्च हेची एम कोन ट्राइबल स्मॉल होल्डर जो फार्मर रहले ट्राइबल एरिया रे जो छोटो छोटो फार्मर्स रहले तांको एम्पावर करिबा ग्रोइंग इंटरेस्ट इन इंटीग्रेटिंग सोलर एनर्जी विथ एग्रीकल्चर टू एनहांस रूरल लाइवलीहुड्स एंड अचीव सस्टेनेबल गोल्स बैकग्राउंड कोन ए न्यूज़ रो इंडिया जते बेले बेसी रु बेसी रिन्यूएबल एनर्जी आडे से गति करूची रिन्यूएबल एनर्जी रे एक्सपेंशन होची स्पेशली सोलर एनर्जी रही आउ तार जो टार्गेट रही 2030 और 2070 जाए क्लाइमेट कमिटमेंट्स तार रही इंडिया तो जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स अच्छे जो मैंने 80% ऑफ इंडिया रो एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स कंस्टिट्यूट करछन से माने चैलेंज फेस करछन काहे ना से माने को पकरे इतना इनकम नहीं और क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी से माने क्लाइमेट चेंज को बहुत वल्नरेबल काहे ना से माने एतटा रिसोर्सफुल होती ताको पके रिसोर्स नहीं तापर फंड्स नहीं इनकम भी लो ताकर तो गवर्नमेंट स्कीम जेमति कि पीएम कुसुम हे गला तार एम कोन तार एम होची प्रमोट सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर किंतु इम्प्लीमेंटेशन तार अनइवन रही छि एतरा खास इम्प्लीमेंटेशन हे पारिनी अक्रॉस स्टेट्स इवनली इम्प्लीमेंटेशन हे पारिनी कोन से स्टेट रे अधिका भल से इम्प्लीमेंट हे छि तो कोन से स्टेट रे इम्प्लीमेंटेशन पुअर रही छि कोरापुट जे कि गोटे ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट अछि सेटा गोटे मॉडल हिसाब रे ताको नौचंदी सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट पाई थ्रू एपीवी एग्री फोटोवोल्टाइक्स पाई कोरापुट को निया जाउची एज अ मॉडल फॉर सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट आ कोरापुट होची गोटे ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट कोन कोन कांसेप्ट्स अछि ए न्यूज़ रे फर्स्ट हमें देखले एग्री फोटोवोल्टाइक्स गोटे टर्म अछि एपीवी आर डेफिनेशन कोन डुअल यूज land management system where solar panels are installed above crops enabling simultaneous energy generation and farming eta gote dual land management system jete solar panels crop upare
install होची आ सेटा enable कोन करछि प्रमोट कोन करछि एनर्जी जनरेशन प्रमोट करछि आ फार्मिंग प्रमोट करछि ऑब्जेक्टिव कोन एग्री फोटोवोल्टाइक्स रो create a third crop income from solar energy in addition to regular agriculture agriculture रे से माने जहा इनकम करथिबे solar energy solar panels install हेजिबो it act as a third crop से माने सेठु भी इनकम करि परिबे solar energy रो भी इनकम करि परिबे सोलर इरेडियंस कोन जेतबेले हमें सोलर एनर्जी ऊपर पढुचे सोलर इरेडियंस गोटे टर्म हमें देखि देबा आर डेफिनेशन कोन पावर पर यूनिट एरिया रिसीव्ड फ्रॉम द सन ठीक अछि सन रो जहा भी पावर आसुची द पावर पर यूनिट एरिया ताकू कहउछंती सोलर इरेडिएशन ओडिसा रे 5.3 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे ऑन एवरेज सेटा रहिची जेटा कि हाईली फेवरेबल फॉर सोलर प्रोजेक्ट सोलर इरेडियंस ओडिसा रे कोन एतिकी पीएम कुसुम स्कीम कोन फुल फॉर्म होची प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान एटा रहिछि तार फुल फॉर्म पीएम कुसुम रो एम कोन सोलर एनर्जी एग्रीकल्चर रे यूज करबा स्पेशली थ्रू का द्वारा सोलर पंप्स और डिसेंट्रलाइज्ड पावर प्लांट्स द्वारा ICRIER आर फुल फॉर्म कोन इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड एग्रीकल्चर इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस एटा गोटे इंडियन थिंक टैंक लीडिंग इंडियन थिंक टैंक जोटा कि प्रोवाइड करूची टेक्निकल और पॉलिसी इनपुट एटा एबे इन्वॉल्व कराइची कोडी कोरापुट रो एपीवी पायलट प्रोजेक्ट एडवांटेजेस कोन रहउची पर्टिकुलर स्टेप रो एटा गोटे एडिशनल इनकम प्रोवाइड करबो जेमति मो प्रीवियस स्लाइड रे कहली इट विल एक्ट एज अ थर्ड क्रॉप फार्मर माने सरप्लस सोलर एनर्जी जो सोलर पैनल रे स्टोर हेक रहउची ताको से माने बिकी परिबे सेतु से माने इनकम जनरेट करि परिबे सो इट बिहेव्स एज अ थर्ड क्रॉप boosting their overall income so additional income land optimization habo dual use of land for both agriculture and energy pai yes both solar energy and cultivation pai ki climate resilience reduces carbon footprint and dependence on fossil fuel जेतो renewable energy promote होची तो सेटा carbon footprint को decrease करिवो आ fossil fuel ऊपर जो dependency सेटा को मध्ये reduce करिवो तो climate resilience boost हो empowering marginal farmers मन को empower करिवार कथा एटी कोहा जाउची पर्टिकुलर इनिशिएटिव द्वारा पर्टिकुलर स्टेप द्वारा जे ट्राइबल और स्मॉल होल्डर फार्मर्स रहले जेंति कि कोरापुट रे से माने एतरे बेनिफिट पाई परिवे सिनर्जी विथ अलाइड सेक्टर्स लाइव स्टॉक सेक्टर फिशरी सेक्टर जो अलाइड सेक्टर्स रहले अपार्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फार्मिंग एग्रीकल्चर थ्रू स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस तो ए सब अलाइड सेक्टर्स it can support these allied sectors through stable electricity access so it would synergy provide karibo with allied sectors to whom between the farming and between the plant cultivation and the allied sectors sustainable development goals संगे एडा अलाइन होची पर्टिकुलर काइना रिन्यूएबल एनर्जी कथा एटी कोहा जायछि और इंडिया रो रिन्यूएबल एनर्जी रो टारगेट सहित स्टेप ता अलाइन होची नेक्स्ट हमें देखिबा जैकफ्रूट इकोनॉमी कंधमाल लीड्स द वे कहां अंडर है जीएस पेपर 3 इकोनॉमी अंडर है आसुची रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स न्यूज रे कोन अछि कंधमाल डिस्ट्रिक्ट जो रही छि ओडिसा रो एटा गोटे इमर्जिंग हब हिसाब रे निया जाय छि कोथि पई कि प्रोसेस्ड जैकफ्रूट प्रोडक्ट्स पणसर जो प्रोडक्ट्स रही छि जेमति कि पणसर जो चिप्स हैला पाउडर हैला बा करी कट्स हैला प्रोसेस्ड जैकफ्रूट प्रोडक्ट्स पई कि कंधमाल डिस्ट्रिक्ट को गोटे इमर्जिंग हब हिसाब रे देखा जाय छि ओडिसा जैकफ्रूट मिशन जे कि एक्टिवली प्रमोट करूची वैल्यू एडिशन कोथि पई कि जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स रहिला प्रोसेस्ड जैकफ्रूट प्रोडक्ट्स रहिला और कमर्स तांकर कमर्शियलाइजेशन लॉन्च ऑफ ए 2 crore jackfruit processing unit at Kalinga under the management of Kasam Kandhamala Apex Spice Association for marketing 2 crores rupees जैकफ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट एटा लॉन्च हेची कोठी कलिंग रे कहा अंडर रे मैनेजमेंट ऑफ कसम कोन कंधमाल अपेक्स स्पाइस एसोसिएशन फॉर मार्केटिंग अंडर रे एटा लॉन्च हेची तो एटा गोटे शिफ्ट देखा जाउची कोठो शिफ्ट जो सीजनल जैकफ्रूट प्रोड्यूस होतिला सेथिरो शिफ्ट देखा जाइची टू ईयर राउंड जैकफ्रूट इकोनॉमी वर्ष सारा मिलिबो जैकफ्रूट प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स creating new income streams for tribal farmers बैकग्राउंड टिके देखबा कंधमाल कोन कंधमाल होची गोटे ट्रेडिशनली इट इज नोन फॉर टर्मरिक एंड जिंजर बट हैज हाई अनटैप्ड जैकफ्रूट पोटेंशियल आरो
जैकफ्रूट बहुत प्रोड्यूस होची सेठी तो से तार जैकफ्रूट पोटेंशियल एपर्यंत एटा हाईली अनटैप्ड रही आउ जो कंधमाल रीजन अच्छी 6 लाख टन जैकफ्रूट एनुअली प्रोड्यूस करे आ जोड़ा कि होची मोस्टली वाइल्ड फॉरेस्ट वाइल्ड जैकफ्रूट्स ओडिशा जैकफ्रूट मिशन देखिबा ओडिशा जैकफ्रूट मिशन होची ओडिशा जैकफ्रूट मिशन द ऑब्जेक्टिव कोन ये प्रमोट करू जैकफ्रूट एज अ कमर्शियली वायबल एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जैकफ्रूट को प्रोसेस भी करी हबो तो एटारे वैल्यू एडिशन हेले सेटा भी सेल हे परछ गोटे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हिसाब रे भी काम करि परछ आ कमर्शियली कमर्शियलाइजेशन मध्ये हे परछ तो कमर्शियली वायबल ओडिशा जैकफ्रूट मिशन ए पर्टिकुलर फ्रूट को तार कमर्शियल वायबिलिटी आउ वैल्यू एडिशन बढ़ाइबा तार ऑब्जेक्टिव एंश्योरिंग बेटर रिटर्न्स फॉर द फार्मर्स कवरेज को एरिया रे रही कंधमाल कलाहांडी कोरापुट एंड ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट बैक्ड बाय स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट थ्रू बैकिंग मिलुची एंड सपोर्ट फ्रॉम ऑर्मास कसम देखिबा जोटा कंधमाल अपेक्स स्पाइसेस एसोसिएशन फॉर मार्केटिंग रही है गोटे लोकल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव कोथि जैकफ्रूट से कलेक्ट करंती प्रोसेस करंती मार्केट करंती एटा इन्वॉल्व करूची कंधमाल बेस्ड प्रोडक्ट्स लाइक जेमति टर्मरिक और जिंजर कसम अंडर रे इन्वॉल्व अछि ऑर्मास कोन ओडिशा रूरल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग सोसाइटी जे कि बैक करूची along with whom स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कहा को ओडिशा जैकफ्रूट मिशन को एटा कोन एटा गोटे स्टेट रन फैसिलिटी बॉडी फैसिलिटेट कहा करूची रूरल और ट्राइबल प्रोडक्ट रो मार्केटिंग को फैसिलिटेट करे वैल्यू एडिशन भी हमने बहुत थोड़ा देखिले टर्म एबे वैल्यू एडिशन कोन वैल्यू एडिशन होची जेतबे गोटे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को रॉ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को फॉर एग्जांपल रॉ जैकफ्रूट ताको प्रोसेस करिकी ताको थ्रू प्रोसेसिंग मार्केटेबल फॉर्म को आणुचंती जेमति चिप्स हे गला पाउडर्स हे गला बा रेडी टू कुक आइटम्स हे गला तो ताको कहा जाउची वैल्यू एडिशन एथिरे वैल्यू ऐड करा जाउची रॉ मटेरियल रे तापरे से एमिति किछि प्रोडक्ट्स रे मार्केट को छडा जाउची जोडा कि कहा जाउची मार्केटेबल फॉर्म सच एज चिप्स पाउडर्स रेडी टू कुक आइटम्स मे बी सेथिरे प्रिजर्वेटिव्स ऐड करा जाउथिबो मे बी ताको प्रोसेस करा जाउथिबो मे बी ताको ड्राई करा जाउथिबो एटसेट्रा leads to higher price realization shelf life extension through adding preservatives reduction of post harvest losses advantages कोन आ तार सिग्निफिकेंस कोन इनकम जनरेट हबो जल पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कमिबो जो जैकफ्रूट गुडा बळिला सेडा सेल हे पारलानी एज द रॉ फॉर्म सेगुडा कोन को सेगुडा प्रोसेस हबो आउ मार्केट को छडा जिवो इन द फॉर्म ऑफ मार्केटेबल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ चिप्स हला पाउडर हला रेडी टू कुक आइटम्स हला आउ एसबो जिंस पई की रॉ जैकफ्रूट रो जति की प्राइस थिबो मार्केटेबल फॉर्म्स रो प्रोसेस्ड आइटम्स रो प्राइस होची रॉ आइटम थारो सब बेले अधिक तो सेटा इनकम जनरेट करछि को मानक पई ट्राइबल फार्मर मानक पई कि गोटे न्यू इनकम स्ट्रीम हे जारछि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करिवो जते बेले कि प्रोसेसिंग एक्सेस जैकफ्रूट प्रोडक्शन रो प्रोसेसिंग और मार्केटेबल फॉर्म्स को छडा जिवा पई कि प्रोसेसिंग यूनिट्स दरकार डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दरकार लॉजिस्टिक सपोर्ट दरकार तो जते बेले ए सब फैक्टरीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बा लॉजिस्टिक स्ट्रेंथन हबो गोटे एरिया रे तो सेटा सेतरे कोन हबो से सब यूनिट्स रे लोक मान को जॉब दिया जीव टू कैरी सच फंक्शंस तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हबो लोकल जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलिबो फूड सिक्योरिटी इनफोर्स करिवो इट विल स्ट्रेंथन द फूड सिक्योरिटी locally sourced and nutritious foods like jackfruit हेल्थ बेनिफिट अच्छे जैकफ्रूट पाउडर बा फ्लावर जो जोटा कि डायबिटिक लोक मानक पई बहुत हेल्पफुल हेल्थ कॉन्शियस जो माने कंज्यूमर्स रहले जो माने ग्लूटेन फ्री स्पेसिफिकली जो माने ग्लूटेन फ्री प्रिफर करूचंदी तांगा डाइट रे हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स से मानक पई मध्ये एटा हेल्थ बेनिफिट देई थाए मार्केट एक्सपेंशन chips and other products being marketed across Odisha and beyond जहाँ भी चिप्स रहला चिप्स रो मार्केट एबे जहाँ भी मैक्सिमम पोटैटो रो चिप्स होउछ बा
बनाना रो चिप्स होची तो एटा मार्केट एक्सपेंशन प्रोवाइड करबो को इंडस्ट्री चिप्स इंडस्ट्री आ अदर प्रोडक्ट्स रे जोडा कि ओडिसा आ द बियॉन्ड मध्य जाउची सेल हवा पई वुमेन एम्पावरमेंट हवा जेते बळे छोटे छोटे एरियाज रे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को से पोटेंशियल मिलिबो कि से माने पार्टिसिपेट करि परिबे इन व्हाट इन दिस प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग चिप्स पैकेजिंग हे गला पाउडर्स पैकेजिंग हे गला तो से वुमेन एम्पावरमेंट बढ़िबो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप जैकफ्रूट ट्रीज दे आर हार्डी लो मेंटेनेंस से माने एंड दे आर सुटेड टू क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन्स तो से मानु कह जे क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप नेक्स्ट आमे देखबा टॉक्स टू रिजॉल्व महानदी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करबा पई कि टॉक्स कंडक्ट होजी न्यूज रे अछि ओडिसा और छत्तीसगढ़ से माने टॉक्स इनिशिएट करिसेंती कोथ पे कि महानदी रिवर डिस्प्यूट जोटा कि चली गोटे वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट ताकू एमिकेबली हैंडल करबा पई कि रिजॉल्व करबा पई महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एडिशनल टाइम देछि फॉर नेगोशिएशन टू दिस स्टेट्स कहाँ अंडर इम्पोर्टेंट जीएस पेपर 2 पॉलिटी और गवर्नेंस अंडर इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकली फॉर मेल्स तो महानदी रिवर विषय एठी हम एठी ब्रीफली देखिबा आर लेंथ रही 858 किलोमीटर अप्रॉक्स ओरिजिन होची सिहावा हिल्स इन छत्तीसगढ़ रो ओरिजिनेट हेची मेजर स्टेट जहां थ्रू ये फ्लो हुए सेटा होची छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा वाइटल कोथि में महानदी रिवर इरिगेशन पाई ड्रिंकिंग वाटर पाई आउ इंडस्ट्री पाई पर्टिकुलरली इन ओडिशा बैकग्राउंड कौन ए इश्यूर महानदी रिवर जोटा कि गोटे मेजर इंटरस्टेट रिवर फ्लोज थ्रू छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा छत्तीसगढ़ होची अपस्ट्रीम एंड ओडिशा होची तार डाउनस्ट्रीम चैनल डिस्प्यूट स्टार्ट हेतिला जेतबेले छत्तीसगढ़ कोन कला बैरेज आउ डैम्स कंस्ट्रक्ट कर देला जोटा कि ओडिशा जेहेतु डाउनस्ट्रीम रीजन तो ओडिशा रे कोन हैला वाटर फ्लो रिड्यूस हे गला ड्यूरिंग नॉन मॉनसून मंथ्स ठीक अछि तो सेटा एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड को नेगेटिवली अफेक्ट कला तो ओडिशा गोटे केस फाइल कला 2016 रे सुप्रीम कोर्ट थारे व्हिच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ महानदी रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2018 रे फॉर्म होला कहा अंडर ए रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल फॉर्म है इंटरस्टेट रिव्यू रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट अंडर ए फॉर्म होला और ए ट्रिब्यूनल टा ट्रिब्यूनल पाखरे कोन कोन पावर थाए इट कैन कंडक्ट हियरिंग्स डाटा इंस्पेक्शन करि परिबा एंड फील्ड विजिट्स मध्ये कर परिबा इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट जहां अंडर ट्रिब्यूनल फॉर्म होची एडा कोन आर पर्पस होची जहां भी वाटर डिस्प्यूट रही बिटवीन द स्टेट्स ताकू रिजॉल्व करबा थ्रू अ लीगल फ्रेमवर्क बाय प्रोवाइडिंग अ लीगल फ्रेमवर्क तो एटा यूनियन गवर्नमेंट को एम्पावर करे पावर दिए कोथि पई गोटे ट्रिब्यूनल फॉर्म करबा पई कि जदि स्टेट माने धर ओडिशा बा छत्तीसगढ़ हे गला ओडिशा बा छत्तीसगढ़ हे गला ए माने धर परस्पर मध्य कथा है कि किछ गोटे एग्रीमेंट को रीच करि पारलेनी तो सेटा यूनियन गवर्नमेंट को पावर दिए कि से तापर गोटे ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करबो अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट फॉर व्हाट फॉर द एमिकेबल रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट आ ए ट्रिब्यूनल जहां भी डिसीजन दबो सेटा होची बाइंडिंग डिसीजन मानिबा को पार्टीज माने बाध्य महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल केबे कॉन्स्टिट्यूट हेबे 2018 रे हितला एबे तार करंट चेयरमैन की अछि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी mandated to adjudicate dispute between Odisha and Chhattisgarh I told you before regarding equitable water sharing advantages कोन ए ट्रिब्यूनल रो फास्टर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जेते गोटे पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाउची गोटे पर्टिकुलर इशू पई कि तो सी पर्टिकुलर इशू पर ही फोकस करबो तो सेतरे रिजॉल्व हे जिवो फास्टर रिजॉल्व होबो इशू लीगल और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस प्रोलॉन्ग पीरियड जाय चलिबोनी it will resolve the issue fast state cooperation it strengthens the federal spirit and promotes center state and interstate cooperation ठीक अछि livelihood security ensures better planning for irrigation and agriculture especially in Odisha's lower basin जेतोले ओडिशा it is a downstream region for Mahanadi river तो जेतोले dispute tribunal fast conflict resolution से डिसीजन सुनेबे तो सेथिरे कोन हबो जो नॉन मॉनसून सीजन रे पानी आसु नथिला तो एबे एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस पई ड्यूरिंग द नॉन मॉनसून सीजन लोक माने इरिगेशन और एग्रीकल्चर पई पानी यूज करि परिबे सो इट विल एंश्योर बेटर प्लानिंग फॉर इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर इन ओडिसा's लोअर बेसिन
तो लाइवलीहुड सिक्यूरीटी एथिरे बढ़िबो जेतोले बेटर इरिगेशन और एग्रीकल्चर हो इकोलॉजिकल बैलेंस हो जॉइंट वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी it will lead to joint water management strategy between Odisha and Chhattisgarh. Economic efficiency, reduce litigation cost and delays in project clearances on both sides. गोटे इश्यू प्रोलंग पीरियड जाए चलिए तार लिटिगेशन कॉस्ट रही डिलेज रही इकोलॉजिकल बैलेंस को हैम्पर कर लाइवलीहुड इनसिक्योर कर तो जिते टाइमली रिजॉल्व हो इश्यूटा इट विल एनश्योर द इकोनॉमिक एफिशिएंसी सो रिड्यूस द लिटिगेशन कॉस्ट जहाँ भी ये केस पछरे जहाँ भी कॉस्ट पड़ी था दीटा स्टेट मानक से रिड्यूस हो पार एंड डिलेज इन प्रोजेक्ट क्लीयरेंस ऑन बोथ साइड्स बट एथरे किसी डिसएडवांटेज रही डिसएडवांटेज कौन जमी डाटा शेयरिंग इश्यू ट्रस्ट डेफिसिट ओवर हाइड्रोलॉजिकल डाटा ट्रांसपेरेंसी दी जन स्टेट को मध्य जहाँ भी डाटा शेयरिंग होची रिलेटेड टू द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हाइड्रोलॉजिकल डाटा ट्रांसपेरेंसी से गोटे ट्रस्ट इश्यू रही पॉलिटिकल फैक्टर वाटर शेयरिंग को इक्विटेबल वाटर शेयरिंग को इश्यू को पॉलिटिसाइज कर दिया जोटा कि डिफरेंट रूलिंग पार्टीज से निज इच्छा इश्यू को हैंडल कर सो डिफरेंट रूलिंग पार्टीज इन स्टेट्स में पॉलिटिसाइज वाटर शेयरिंग और प्रॉब्लम टा कॉम्प्लिकेट से जब गोटे स्टेट रे गोटे गवर्नमेंट आउ गोटे स्टेट रे से सेम गवर्नमेंट नथिबो तो ताको भितरे ड्यू टू पॉलिटिकल फैक्टर्स वाटर शेयरिंग बिकम्स पॉलिटिसाइज्ड टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी रही requires detailed hydrological modeling and equitable allocation formula हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग और इक्विटेबल एलोकेशन फॉर्मूला थ्रू टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी रही जहाँ फल वाटर शेयरिंग इक्विटेबली हो पारुनी क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स मॉनसून वेरिएबिलिटी क्लाइमेट चेंज बा क्लाइमेट प्रॉब्लम कि जहाँ भी मॉनसून आगुरी फॉर एग्जांपल रीजनल मॉनसून वेरिएबिलिटी गोटे रीजन में पर्टिकुलरली धर गोटे टाइम रे मॉनसून आसूला बट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स से टाइम रे न आसिकी 1 मंथ पर आसूची कि किछि टाइम पर आसूची तो से जो मॉनसून वेरिएबिलिटी क्रिएट होची इट इज मेकिंग लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट मोर डिफिकल्ट टू एनफोर्स एंड डिलेड जस्टिस ऑफ कोर्स गोटे डिकेड हो गलानी ए इश्यूटा सेमती चली आउ एथिरे लाइवलीहुड अफेक्ट होची एंड मिलियंस ऑफ पीपल मध्य अफेक्ट होचंती वे फॉरवर्ड कौन हम फाइनलाइज अ बायलैटरल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट गोटे फाइनलाइज होगा दरकार जोटा कि सीजनल फ्लो क्रॉप पैटर्न और बेसिन नीड हिसाब रे हेइतिबा दरकार डाटा एक्सचेंज ट्रांसपेरेंट थिबा दरकार सेति कि जॉइंट टेक्निकल कमिटी सेट होगा दरकार टू मॉनिटर द फ्लो एंड यूसेज इन रियल टाइम सेंट्रल एजेंसी मानन को इन्वॉल्व कर दिबा दरकार एथिरे सेंट्रल वाटर कमिशन हे गला मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हे गला तो से माने कोन करिवे गोटे न्यूट्रल ग्राउंड रो ए जिंसटी को देखि कि they can without biasness रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशन मान को स्ट्रेंथन करा जबा दरकार जेमति कि महानदी रिवर बेसिन अथॉरिटी गोटे क्रिएट करा हेले सी कोन करिवो सी इंटीग्रेटेड प्लानिंग और डिस्प्यूट अवॉइडेंस को प्रमोट करिवो पब्लिक एंगेजमेंट जेमति कि लोकल पॉपुलेशन मानको सेंसिटाइज करा जबा दरकार फार्मर मानको इक्विटेबल लैंड यूज ऑफ कंजर्वेशन पई कि से मानको अवेयरनेस प्रोवाइड करा जबा दरकार से मानको लीगल फ्रेमवर्क को अपडेट करा जबा दरकार जेमति कि 1956 रो एक्ट को ताको बहुत पुराना हो गलानी एक्ट को ताको अपडेट करा जबा दरकार टेलर टू प्रेजेंट नीड्स along with modern water management and climate concerns. Question number 6 एटी आंसर करिवे इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 आर प्राइमरीली ये कहा कौन प्रोवाइड करे स्टेटमेंट 1 रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर यूजेस इन स्टेट्स स्टेटमेंट 2 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल्स टू रिजॉल्व वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स allocation of water resources between the different countries promotion of water conservation projects at the village level आंसर करिवे
नेक्स्ट रूरल हेरिटेज साइट्स टू बी आइडेंटिफाइड प्रिजर्व अंडर द न्यू गवर्नमेंट इनिशिएटिव न्यूज रे कोन अछि ओडिशा गवर्नमेंट लॉन्च करछि गोटे नुवा रूरल हेरिटेज इनिशिएटिव जोडा कहै जाउछि पंचायत धरोहर एटार एम कोन एम टू आइडेंटिफाई प्रिजर्व डॉक्यूमेंट एंड प्रमोट हेरिटेज साइट्स जोडा रूरल एरियाज रे अछि पंचायत रो इन्वॉल्वमेंट रे आंको आइडेंटिफाई करबा प्रिजर्व करबा डॉक्यूमेंट करबा आ प्रमोट करबा और जहाँ भी डाटा कलेक्ट हम से कोर्ट अपलोड हम मेरा गाँव मेरी धरोहर गोटे पोर्टाल अच्छी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रे सेठी सेटा अपलोड हम GS2 गवर्नेंस अंडर रे फॉल करूची पर्टिकुलर टॉपिक बोथ प्रीलिम्स और मेंस पाई इंपोर्टेंट पंचायत धरोहर ओडिशा इनिशिएटिव एटा होची गोटे स्टेट लेवल प्रोग्राम जहाँ जी की पंचायत मान को एंगेज करे कोथि पई कि आइडेंटिफाई करिया को और कंजर्व करिया को रूरल हेरिटेज साइट जति रहला आर्टिफैक्ट्स रहला रूरल एरियाज रे ताको आइडेंटिफाई और कंजर्व करिया पई पंचायत मान को से एंगेज करो डाटा टू बी सिस्टमैटिकली कलेक्टेड एंड वैलिडेटेड by elected panchayat members and local stakeholders elected panchayat member और local stakeholder रहले से माने डाटा को सिस्टमैटिकली कलेक्ट करि परिबे आ वैलिडेट करि परिबे बैकग्राउंड कोन ए न्यूज रो रूरल हेरिटेज जो इंडिया रे अछि सेटा ऑफन कहा अंडर डॉक्यूमेंटेड सेटा डिस्पाइट इट्स कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस सेटा अंडर डॉक्यूमेंटेड जति कि मात्रा रे डॉक्यूमेंट हबा कथा सेटा हेइ नै तो ओडिसा रे with its 6,800 plus ग्राम पंचायत और ट्राइबल फोक रिलीजियस और आर्किटेक्चरल हेरिटेज मध्य ओडिसा रो स्ट्रांग तो सेथिरे कोन ग्राम पंचायत मान को एथिरे इंक्लूड करा जिवा पई कॉलेज मेरा गांव मेरी धरोहर एटा कोन एटा गोटे सेंट्रल इनिशिएटिव कहा अंडर रे आसुची मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर रे आसुची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो आर एम कोन कि जहाँ भी हेरिटेज साइट अछि ताको डिजिटली डॉक्यूमेंट करबा आ जियो टैग करबा अक्रॉस इंडियन विलेजेस पार्ट ऑफ ब्रॉडर आजादी का अमृत महोत्सव कैंपेन टू सेलिब्रेट इंडियाज कल्चर लेगेसी आजादी का अमृत महोत्सव जो कैंपेन थिला कोथ में कि इंडिया रो कल्चरल लेगेसी को सेलिब्रेट करिया पई एटा होची तार गोटे पार्ट ग्राम पंचायत कोन ग्राम पंचायत होचंदी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एट द ग्रासरूट लेवल दे आर द लोअर टियर ऑफ द पंचायत राज सिस्टम से मान को हेरिटेज डॉक्यूमेंटेशन संगे एंगेज करा जिवा पई एटी कथा एटी कुहा जायछि गिवन देयर प्रॉक्सिमिटी एंड लोकल नॉलेज ए स्टेप रे एडवांटेज कोन सिग्निफिकेंस कोन तो एथिरे कोन हो कल्चरल रिवाइवल हो जो गुडा कि नेग्लेक्ट अछि फॉरगॉटन अछि लोक माने भूली जाइछन जो रूरल हेरिटेज को एथिरे ताको कल्चरल रिवाइवल मिलबो कम्युनिटी एंगेजमेंट हो जेंति ग्रास रूट स्टेक होल्डर जेंति ग्राम पंचायत मान को इंक्लूड करा जिबा एंगेज करा जिबा कथा कुहा गला एठी तो सेथिरे कम्युनिटी एंगेजमेंट बढ़िबो टूरिज्म पोटेंशियल बढ़िबो जेतेबेले कि साइट्स गुडा आइडेंटिफाई हबो जो रूरल हेरिटेज साइट गुडा तो सेथिरे कोन रूरल और इको टूरिज्म लोक माने देखिबा को आसीबे इको टूरिज्म सर्किट मध्य एथिरे इंक्रीजिंग हबो और टूरिज्म बढ़ले कोन हबो रेवेन्यू जनरेट हबो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन मध्य इंक्रीज हबो अपलोडिंग टू एमजीएमडी एंश्योर्स प्रिजर्वेशन एंड वाइडर विजिबिलिटी जेतेबेले ताकू अपलोड करी दिया जिवो टू मेरा गांव मेरी धरोहर एमजीएमडी रे तो सेथिरे कोन हबो तांकर प्रिजर्वेशन मध्य सेथिरे इंक्रीज हबो आ बहुत लोक ताकू देखि परिबे आ अवेयर ही परिबे तार विजिबिलिटी मध्य बढ़ी जिवो वाया अ नेशनल प्लेटफॉर्म जेहेतु मेरा गांव मेरी धरोहर गोटे नेशनल प्लेटफॉर्म रूरल हेरिटेज रो प्रिजर्वेशन आ visibility बढ़ी जिवो decentralized heritage management empowers panchayats in heritage governance aligning with the spirit of 73rd constitutional amendment पंचायत जे रहिले से माने को एम्पावर करा जिबा कथा एडी करा जायछि एंगेज करा जिबा कथा एडी कुहा जायछि को थिरे हेरिटेज गवर्नेंस रे जोडा कि 73rd constitutional amendment जोडा करा जायतिला to constitutionalize PRIs पंचायत और PRIs टास्क पीरियड सहित ए पर्टिकुलर स्टेप टा अलाइन हो डिसेंट्रलाइज्ड हेरिटेज मैनेजमेंट कि हेरिटेज मैनेजमेंट जो रहिला आर्ट एंड कल्चर रो मैनेजमेंट जो रहिला सेटा केवल सेंटर बा स्टेट पाखरे भी नहीं सेटा विलेजेस पाखरे भी अछि ग्राम पंचायत पाखरे अछि जोटा कि गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस मध्ये बढ़िबो जेतेबेले कि आर प्रिजर्वेशन एंड विजिबिलिटी बढ़िबो सेतरे हेरिटेज लिटरेसी मध्ये बढ़िबो लोकल यूथ
स्कूल्स सेमानकु जेतबे इन्वॉल्व करा जिवो प्रिजर्वेशन रे सेतरे हेरिटेज लिटरेसी बढ़िबो लोकमानकर स्टेप टी को फर्दर केमिति आहुरी स्ट्रेंथन करा जिबा दरकार वे फॉरवर्ड कोन कैपेसिटी बिल्डिंग कराई को मानकर जो माने इतरे इंक्लूड होबार कथा को जाय जेंति कि पंचायत ऑफिशियल्स हेगला लोकल यूथ हेला इन हेरिटेज मैपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट्स मानकु इन्वॉल्व करा जिबा दरकार स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कर एक्सपर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट्स हिस्टोरियन मानकर एठी एक्सपर्ट्स मानकु इन्वॉल्व कले सेथिरे कोन होबो presentation and visibility will increase fund allocation जेमति कि गोटे डेडिकेटेड फंड एस्टाब्लिश करा जिबा दरकार अंडर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन और रूरल टूरिज्म स्कीम डिजिटल मैपिंग होबा दरकार जेमति कि जीआईएस टूल यूज होबा दरकार जियो टैग करिया पई विजुअलाइज करिया पई रूरल हेरिटेज साइट्स को प्लेटफॉर्म जेमति एमजीएमडी भुवन प्लेटफॉर्म्स रे इंटीग्रेट विथ स्कीम लिंक आइडेंटिफाइड साइट्स टू स्वदेश दर्शन बाकी स्कीम मान बाकी आइडेंटिकल स्कीम मान संगे इंटीग्रेशन हवा दरकार जमी स्वदेश दर्शन है अर्बन मिशन है रूरल एंड अर्बन मिशन एक भारत श्रेष्ठ भारत है से तार गोटे होलिस्टिक डेवलपमेंट हम प्रमोट हेरिटेज टूरिज्म हेरिटेज ट्रेल्स डेवलप करा दरकार एंड इको टूरिज्म सर्किट्स डेवलप करा दरकार कौन हम कल्चरली रिच डिस्ट्रिक्ट गंजाम कोरापुट कलाहांडी ये सब से डेवलप कले हेडा प्रमोट करिवो कोन प्रमोट करिवो हेरिटेज टूरिज्म ओडिशा टॉप्स इन सिकल सेल डिजीज को टॉपिक अंडर आसी जीएस2 हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर प्रीलिम्स एंड मेंस अंडर आसी व्हाई इन न्यूज़ Odisha has recorded highest number of sickle cell diseases in India around 96,000 cases registered हेची on sickle cell portal रे यूनियन मिनिस्टर जे रही जेपी नड्डा से कौन कहते इन्फॉर्म कर लोकसभा को दैट ओवर 6 crore इंडिविजुअल अक्रॉस 17 ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट हैव बीन स्क्रीन्ड फॉर सिकल सेल एनीमिया 2 lakhs around individual से माने कंफर्म हे सर्च एज डिजीज एंड 16 lakh आर करियर्स बैकग्राउंड कोन रहछि सिकल सेल डिजीज एटा होछि गोटे जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर माने रखिबे एटा होछि गोटे जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर प्राइमरीली को मानू अफेक्ट करे ट्राइबल बा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को से अफेक्ट करे इंडिया लॉन्च करता नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन केबे 2023 रे 2047 जाए टारगेट रही छि एलिमिनेशन स्टेट्स जेमति कि ओडिशा हेगला मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ से मानकर प्रिवेलेंस बेसी देखिबा पे सब स्टेट्स मानकर मिले स्पेशली इन शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन ओडिशा जो ट्राइबल रीजन्स रही जेमती सुंदरगढ़ मयूरभंज एंड रायगढ़ सेठी हाई डिजीज बर्डन रिपोर्ट होछि सिकल सेल डिजीज एठी मोइटी गोटे फिगर अटैच करछि गोटे पिक्चर अटैच करछि एठी देखिबे नॉर्मल ब्लड सेल से माने कोन थांती एमदी राउंड थांती एंड दे आर फ्लेक्सिबल ठीक अछि एटा धर गोटे आर्टरी बा वेन एटी ब्लड सेल्स एटी मूव होछि सिकल सेल होछि एम्प्टी शेप दिस इज नोन एज सिकल सेल इन सिकल सेल डिजीज रेड ब्लड सेल्स स्टिफन फ्लेक्सिबल रो से माने कोन होती से माने स्टिफ हे जाती और शेप भी चेंज कर दियती कॉमा शेप रो बा सिकल शेप रो एटी अछदी क्रिसेंट शेप भी आको कहउछंती जो ब्लड रेड ब्लड सेल्स जे कि फ्लेक्सिबल थिले आउ ब्लड वेसल थ्रू रो से माने नॉर्मली पास कर करथिले जो सिकल सेल अछंती से माने दे डोंट पास इजीली थ्रू द ब्लड वेसल्स बिकॉज़ दे आर स्टिफ ठीक अछि तो सिकल सेल डिजीज सिम्पटम रे कोन कोन इंक्लूड होछि फ्रीक्वेंट पेन एपिसोड्स पेन अफेक्ट्स योर चाइल्ड चेस्ट बैक लेग्स आर्म्स एंड मोस्ट ऑफन स्वेलिंग होबो इन्फ्लेमेशन होबो जॉइंट्स रे पेनफुल स्वेलिंग होबो हैंड और फीट रे एनीमिया होबो फैटिग होबो पेलनेस एंड वीकनेस जॉन्डिस होबो जोडा कि येलोइंग ऑफ स्किन एंड व्हाइटनेस ऑफ आईज एगुडा सब होची सिम्पटम्स सिकल सेल डिजीज रो सिकल सेल डिजीज को एटा होची गोटे हेरेडिटरी ब्लड डिसऑर्डर जेते बळे कि रेड ब्लड सेल कोन होती रिजिड हे जाती सिकल शेप्ड हे जाती बा क्रिसेंट शेप्ड एंड स्टिकी और स्टिफ तो एटा इंपैक्ट कोन करे
ए ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर दिए तो से कौन हम पेन हम ऑर्गन डैमेज हम ब्लड फ्लो ब्लॉक हेले इन्फेक्शन हम आउ एटा गोटे लाइफ थ्रेटनिंग एटा होची लाइफ थ्रेटनिंग टाइप कौन सिकल सेल ट्रेट एटा होची कैरियर जेते एथिरे गोटिए फॉल्टी जीन थाए जोटी पर्सन जहाँ को एटा थाए जे कैरियर से पर्सन निजे हेल्दी थाए किंतु से तो रिप्रोड्यूस करिवो इट कैन पास इट ऑन आ गोटे होचे सिकल सेल डिजीज जे अफेक्ट हुए ठीक अछि एथिरे दीटा फॉल्टी जीन थाए सिम्पटम्स रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर सिम्पटम्स हमें डिस्कस कले सिकल सेल पोर्टल पर एटा गोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म कोथ पे कि बना जाय छी डाटा स्क्रीन करिया पय डायग्नोस केसेस आउ कैरियर्स जो माने रहले से माने को स्क्रीन करिया पय बना जाय छी सिकल सेल पोर्टल अंडर द नेशनल मिशन आउ एटा हेल्प कोन करे ये पोर्टल मॉनिटर करिबारे ट्रीटमेंट प्लान करिबारे आउ डाटा एनालिसिस करिबारे नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन जो 2023 रे लॉन्च कराइतला कहा द्वारा लॉन्च कराइतला मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा गोल होची यार 2047 जाके सिकल सेल एनीमिया को टोटली एलिमिनेट कर देबा आ फोकस होची ट्राइबल और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऊपर केमिति फोकस करबे अर्ली डायग्नोसिस करिवे लोक मानकर जेनेटिक काउंसलिंग करिवे आ ट्रीटमेंट करिवे एडवांटेजेस कोन इनिशिएटिव रो अर्ली डायग्नोसिस कले कोन हो से माने कैरियर को आइडेंटिफाई करि परिबे आ पेशेंट मान को अर्ली आइडेंटिफाई करि परिबे तो कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस हो इन फ्यूचर हेल्थ इक्विटी ट्राइबल और अंडर सर्व जो पॉपुलेशन रहिले सेमान को टार्गेट करबो ए इनिशिएटिव तो गोटे पब्लिक हेल्थ जो गैप रही सेटा को क्लोज करियो डाटा ड्रिवन प्लानिंग एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग इंक्रीज करा होची एतरे सिकल सेल पोर्टल एनेबल्स एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स निया जीवो ए इनिशिएटिव अंडर रे जेतबे जेनेटिक काउंसलिंग हबो सेटा कोन करबो सेटा रिड्यूस करबो ट्रांसमिशन टू द नेक्स्ट जनरेशन जेतबे कैरियर्स मान को से माने आइडेंटिफाई करि देबे आ कैरियर्स माने ही रिप्रोड्यूस करिकि affected population बड़ा होतले तो से जेतबे जेनेटिक काउंसलिंग हबो इट विल रिड्यूस द ट्रांसमिशन टू द नेक्स्ट जनरेशन होलिस्टिक इंटरवेंशन इट इंक्लूड्स अवेयरनेस स्क्रीनिंग काउंसलिंग आउट ट्रीटमेंट ए सब ए इनिशिएटिव अंडर रे इंक्लूड अछि जोडा कि गोटे कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच क्वेश्चन अछि सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन ऑफ जीन कोडिंग फॉर हेमोग्लोबिन ए हेमोग्लोबिन एस मायोग्लोबिन एंड प्लेटलेट्स एडा को आंसर करिवे आंसर इन द कमेंट and the correct answer and explanation will be discussed in the next class. Puskara Badge National Award. It is a miscellaneous topic. Prelims pai eta important. Mains pai it is not important. Prelims pai khali gote one page information khali gote mone rakhibe. ठीक है. ओडिया फिल्म पुष्कर से कौन करछि बेस्ट ओडिया फिल्म हिसाब रे अवार्ड पाइछि एट 71st नेशनल फिल्म अवार्ड रे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट मार्क करछि इन ओडिया सिनेमा आउ एथरे जने डायरेक्टर से डेब्यू करथिले ओडिया सिनेमा रे सुब्रांशु दास आउ गोटे ओडिया वर्क रहिछि द सी एंड द सेवन विलेजेस ताकू स्पेशल मेंशन मिलिछि इन डॉक्यूमेंटरी कैटेगरी नेशनल फिल्म अवार्ड्स कोन आपको ऑर्गेनाइज किए करे डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करे आउ एथरे कोन कोन कैटेगरीज ऑफ मूवीज इंक्लूड हुए रीजनल सिनेमा इंक्लूड हुए डॉक्यूमेंटरी इंक्लूड हुए फीचर फिल्म्स एंड नॉन फीचर फिल्म्स इंक्लूड हुए jury based and non influenced by box office performance or popularity एटा कहा को अवार्ड मिलबो कहा को अवार्ड न मिलबो एटा प्योरली jury based तो सेतिरे बॉक्स ऑफिस रे से मूवी टी केमिति परफॉर्म करछि तार रेटिंग कोन पता पॉपुलैरिटी कोन से सब काउंट करा जाय बैकग्राउंड कोन नेशनल फिल्म अवार्ड्स जे कि गोटे मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म रिकॉग्निशन इन इंडिया 1954 रे इंस्टीट्यूट हेतला आ एटा को मिनिस्ट्री अंडर एडमिनिस्टर हुए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग this much information is needed last current affairs of today shakti apas in all districts soon gs2 paika important governance under रे आसुची टॉपिक ता न्यूज रे कोन पाइ अछि ओडिसा रा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सबुतिक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को से डायरेक्ट करिसंती to nominate 5 Shakti Apas per district. Now, ये step टा कहाँ under रे आसुची? It is a part of Shakti Shri initiative. अब initiative रो aim कौन? Mentorship, safety, legal awareness और emotional support provide करेगा को माने को female student माने को provide करेगा कोडी higher educational institute माने करे. अब इतरे girl student माने करो empowerment हबो और ताकर confidence बढ़िया.
शक्तिश्री इनिशिएटिव कौन एटा गोटे फ्लैगशिप प्रोग्राम कहा अंडर ओडिशा गवर्नमेंट अंडर आसुची अंडर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एम कौन एम्पावर करबा और मेंटर करबा गर्ल स्टूडेंट मानको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बैकग्राउंड कौन फीमेल स्टूडेंट जो कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज रहले सेमानकर पाखरे सफिशिएंट गाइडेंस नाही पर्टिकुलरली लीगल अवेयरनेस डिजिटल सेफ्टी और मेंटल हेल्थ और करियर प्लानिंग को लेके तो ये इनिशिएटिव टा कॉम्प्लीमेंट करिवो आ जो बाकी नेशनल एफर्ट्स अछि जेंति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी शी बॉक्स याको कॉम्प्लीमेंट करिवो टू ब्रिज द गैप शक्ति अप्पा कोन ए जो पर्टिकुलर एटी गोटे टर्म अछि अप्पा मींस सिस्टर इन ओडिया व्हिच सिग्निफाइज फ्रेंडली अप्रोचेबल मेंटर फिगर पांचटा वुमेन पर डिस्ट्रिक्ट नॉमिनेट हेबे जो माने सिलेक्ट हेबे टू एक्ट एज रोल मॉडल्स okay and it is expected to visit institutions once a quarter for interactive sessions se mane higher educational institutions को visit करिवे और student girl student मानक संगे स्पेशली interact करिवे as mentors roles and responsibilities कोन रहबा तकर जो mentorship रहबो को एरिया से रहबो women safety and legal rights से रहबो cyber security and digital hygiene रे रहबो career guidance and life skills से रहबो emotional and mental health support रे रहबो advantage कोन ए पर्टिकुलर स्टेप रो grassroots level mentorship provide अब जो रूरल आउ एरियाज रे अंडर डेवलप्ड एरियाज रे जो गर्ल्स माने रहले से माने द्वारा पर्सनल से माने को पर्सनल इंटरेक्शन दिया जिवो तो स्टूडेंट माने रिलेट करि परिबे आ बेटर रिस्पोंड कर परिबे तांकर एम्पावरमेंट हबो थ्रू रिप्रेजेंटेशन फीमेल प्रोफेशनल्स एज मेंटर्स एनकरेज एस्पिरेशनल थिंकिंग among particularly girl students safety and awareness मध्ये increase हबो जेतबे गर्ल्स माने तांकर लीगल प्रोटेक्शन कोन राइट्स कोन हेल्पलाइंस कोन साइबर सिक्योरिटी एक्सेट्रा ताको कोन कोन सब पावर्स कॉन्स्टिट्यूशनली थ्रू एक्ट्स दिया जाय छै जेतबे ए सब बाबत रे माने एजुकेट हेबे से माने सेफ्टी और अवेयरनेस बढ़िबो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम स्ट्रेंथन हो रेगुलर इंटरेक्शन इनफोर्सेस ट्रस्ट बेस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट फ्यूज द नॉलेज गैप जो टियर 2 टियर 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रहले एचईआईस रहले से सेथरे नॉलेज गैप्स फिल हो it is mostly important in tier 2 and tier 3 cities okay that is it for today जहाँ जहाँ भी क्वेश्चंस मु कहली ताको कमेंट सेक्शन रे आंसर करिवे and the correct answer and explanation will be discussed in the next session. Thank you.